सर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। पर्डिया ने तो कल काफी लोगों को ट्रेडिंग बंद करवा दिया, जैसे इतने ज्यादा पैसे बन रहे थे तो पर्डिया सेड नो, सो दे halted द ट्रेडिंग कल 4 बजे। I couldn't put a trade on. लोगों के पैसे बन रहे हैं तो बंद कर दिया। हाँ नहीं वो कह रहे हैं कि ये फ्री के है ना, तो इसमें तो ये तो कुछ करना ही नहीं है आपने, एनालाइज क्या करना, बस सेल कर दो। राइट, सो सर सारा ही गिर रहा है अभी हैवीली, आज फिर मार्केट खुलता है काम। ऐसा ही है भाईजान। भाई कभी सोचा था 544 कुछ दिखेगा कभी, 61 पे बैठी थी। उन्नीस हजार 177 18 54 9 हमारे S2 से बाउंस हो गई है। S2 इज डन। से बाउंस हो गई 18,867। S2 is done. S2 is officially done. Good. More people lost their jobs. That's why it kind of went down. Good morning, Ji. Welcome. Good morning. How Trump is behaving? 4,000 पॉइंट गिरा गया और क्या। बैठे बैठाए 4 से लेके 4.5 तक दबाई फिर दी। 4 से 5 8 तक मार्केट गिर रही है। heavy duty.
All right, where are we? Sir, low to go high. S2 पे तो खुल रही है. So planning to go expected low, or let's see what happens next. So sir, हर रोज ही plan है उसका. So 5, 5, 5, 5. So it's testing S2 one more time. आज आने चलने स्ट्राइक प्राइस दीजिए 5690. हम्म. रेट भी बहुत हो गया है.
Extreme low is 5042, extreme high is 573. प्लान तो मार्केट होता ही प्लान क्या प्लान करें मार्केट के मुताबिक प्लान करें मैं एक्चुअली वो एक स्ट्रैटेजी लगाई है हम जस्ट ट्राइंग टू वो काम करते हैं तो मैं ये देखूं ये सिंपल है आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये जो मैंने स्टॉप लॉसेस और इसमें वो जो लगाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है दिस इज Good morning. जो आपने MNQ का आपने जो लिखा है तो वो किस तरह दोनों वो बस नीचे कहा दोनों मैं सिम पे ऑर्डर लूंगा ना MNQ तो आपके हाँ तो नीचे दूसरी टैब खोल लीजिएगा उसकी जो कल जो है सर तो मैं हमारे पास कंट्रोल होता है सर हर ट्रेड के बाद कंट्रोल होता है जैसे कल अगर मैं नहीं देखते तो उसके अंदर हाँ पहले तो ट्रेड वेट खोलें बाकी चीजें छोड़ दें तो एक ट्रेड वेट एपेक्स का एक उधर ताकि इससे पहले कि आप ये काम क्रिटिकल हो जाएगा पीएस के अंदर स्पेशली क्योंकि लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड होती है तो ट्रेल जो है वो हम 10 टिक का रखें 8 टिक का रखें 5 टिक का रखें 20 टिक का रखें डजंट मैटर वो सिर्फ 10 ऑप्टिमल है ईएस के लिए सिर्फ ईएस के लिए ऑप्टिमल कवर्ड है और एमईएस के लिए सेम वो तो सो कल मजा आया देख के मार्केट को 4 बजे we don't care we go with the trend price goes down we go down जिन लोगों ने मार्केट होल्ड की थी 22,000 से उन्होंने तो बना लिया नहीं होल्ड किया जो बेचारे मैं तो कल यहाँ से कह के गया था 20,000 से शॉर्ट कीजिएगा नैस्डैक कह के वर्ड कह के गया था and then it shot up because after expected high that was the only thing remaining so our number was 20,100 I said no we will wait for 20,000 one guy shorted only one said done यही मसला हुआ क्लोज ही नहीं हो रहा था it came so fast so my per day account they put it into I went plus and then I went minus so minus 810 they closed it so I saw profit and then I saw loss and then I'm like I'm trying to put a trade in per day says no more you're not trading because that's not a real trading you're just trying to get a lucky so हाँ कि भाई नहीं क्योंकि मैं
नहीं बाकी फंडेड कंपनियों में ईएस में मैंने बस आंखें बंद करके मैंने बुलनॉक्स में मेरे चल रहा था बुलनॉक्स तो पीए खेल रहे so bullnocks $500 each and I said all right but I tried Perdia it showed me like $1,000 in a blink of an eye and then minus 1,000 but my account is active but they said they halted trading yesterday नहीं मैं थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल चुका हूँ हाँ मैं जब आप थ्रेशोल्ड से निकल जाएं फिर खत्म देखें एपेक्स बुलनॉक्स टेक प्रॉफिट लेजेंड्स once you cross 1500 none of this headache applies that's like your own money right because you're not withdrawing the money it has your money so all of this live trailing nonsense is finished at your threshold so the moment you are in your 1500 they said hey you don't want to take it out play like a real money right so all of this live threshold is only until your original threshold. So nothing to worry. All right. So we have a higher low after a higher, let's see. Okay. Good morning, everybody. Thursday, April 3rd, 9:04 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superarea.com. Let me double check. Good morning, G. Oh, it's not even close to this anyway. I'll do it again. Sorry. So. All right. Good morning, everybody. Thursday, April 3rd, 9:05 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are at joining us from at superareas.com. Yesterday, the Liberation Day came out to be 1,000-point different. Lucky for us, Canada is spared. No tax for Canada, no tax for Mexico. But everybody else across the board got a 10%. And all right, so let's see what happened last night. Around before I left, I had asked everybody if you want to short at 20,000 MNQ or NQ and let it rise. And from 20,000, it fell to 18,817. So incredible. So almost yesterday, we saw 1,200 points of a swing. Sir, आपका FTM ठीक गया? गिरा था जो क्या यार शॉर्ट आप तो शॉर्ट में थे यार चलो no problem no problem so last night what happened was I saw the fireworks live and it falling when it got to expected low I put in some orders then I'm like let's see how far it can go from 20,000. So today, again, we will see the shock waves from the world. My personal opinion, I think the U.S. capitalism is falling slowly, and U.S. produces nothing but imports everything. Biggest economy in the world, almost $30 trillion gets spent every year inside U.S., anywhere from McDonald's to Starbucks to Nike. And of course, I was listening to a good podcast that U.S. can never produce a $200 Nike inside U.S. So they need the Chinese labor. So it is going to be pretty rough for U.S. guys. All I can say is that. So the rest of the countries will do, and this is the Donald Trump effect from 20,045 to 18,817.50. It's okay. He doesn't care about Wall Street. He has said that. So right now, price is opening at S2. Let's look at. We go with the flow. We're not trading stocks. We're only doing futures. The futures we work with the trends. So everyday day trading. So 19,177 is the last night high for Nasdaq futures. And you have 18,819 as a low. So we have a $350 swing to the, and where is ES? ES went as high as
65 to 54.81. So quite a bit of a movement. So we are opening right now at S2. So just like yesterday, from like the last 3 days, it's been going from S2 to, so none of these candles made sense. I think in a single day, this is the biggest drop I've seen in a single day. 1200 point. So I have not witnessed this since I've been doing futures only for 4 years. So from 20,052 to 18,817. My per day account, I was not able to trade. They halted the trading. So they said, hey, sorry, no trading for you. क्योंकि फ्री का पैसा था ना, आप जहां से सेल कर रहे थे पैसे बन रहे थे ना, तो वो एक्सपेक्टेड लॉस से मैंने बाय की, उसने कुछ प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, and it says trading halted. So they can halt it. And by the way, all of our futures, if the market falls around 7%, global trading gets halted. So if the market has gone, because they have a limit there, it's called circuit breaker, like a puri dunya, or it goes up. So same thing. If it goes up 7%, then you will get halted until the next session, right? So there you go, done for the day from S2. Congratulations. I kind of came late. So Acha nikala. Good. So done for the day from S2. Congratulations. So market touched S2. So what's left on the table for us for Nasdaq? Expected low, and what is left on the table for us for ES, expected low in terms of areas. So that is all we are at right now. It's testing S2 one more time on Nasdaq. So 890. And both areas are done at S2. So yesterday's low was 54.81. So we'll wait for at least 54.81 or lower to go towards expected low. If you want to sell, maybe night session high would be a good, but R1 is far. R1 is 100 points far. So R1 is safe. But in between, we have S1. I'm not taking S1 now. And because S1 is so close for Nasdaq. So R1 for 893, 170. So let's look at what we want to do for Nasdaq. So 19,170 minus 18,891. Yeah, so R1 and R1 for both. So R1 and S3. So let's work on R1 and S3. Yeah, expected low in R1, and then we will work with trends and see. Well, let's see what happens at 9:30 when the market opens officially. The stock market, pre-market. Anybody's having any stock? You have Tesla. Ooh, it's down $17 pre-market. Google is down. Microsoft is down. Meta is down $33. This is going to be rough. Apple is down $17. Amazon is down $14. So brace for impact when the market opens. तो फिर एमक्यू में कहाँ करना पड़ेगा? एमबीएस का तो मैंने लगा रखा है। वही नीचे से डुप्लीकेट करें, वो फ्लो बॉट के अंदर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट कर दें।
Yeah, my per dia is working. That's a good sign. हाँ जी, डन है। लेकिन आपने कोई अकाउंट भी तो सिलेक्ट करने हैं ना, वो भी तो ग्रीन करने हैं ना। अब आप पोजीशन विंडो भी नीचे खोल के रखिएगा, in case when I send a signal we have a bit of a setup on 30-20 with a higher low, but wait for the market to open, guys. Let's see which way it goes. लेकिन पोजीशन में रखें, ट्रेडो वेट खोल के रखें, in case keep an eye on trader weight, keep an eye everywhere. हो जाता फ्लैटन ऑल वहां से भी हो जाता है। सॉरी 30-20 का आपने बोला दे रहे थे, मीनिंग वो हायर हाई लोअर लो, उसके बाद पहला ग्रीन ब्लू नजर आ रहा है ना मुझे। रिजेक्शन विक पे हाँ, लेकिन लिमिट लगाते हैं जब आप टॉप ऑफ द बार लेते हैं उसी डायरेक्शन की तरफ जाने के। अगर आपने अगेंस्ट ऑपोजिट जाना है फिर आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी होगा। अच्छा वो रेप्लिकेंट में जो हम सिम पे ट्रेड करते हैं उधर भी ट्रेड यस यस, तो वो कॉपियर भी है ना, लेकिन अगर आपके बॉक्सेस चेक नहीं है फिर नहीं होगा। यस तो आप सिग्नल दीजिए वो भी कॉपी होगा, हम नहीं, आप जो करेंगे वो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक और विंडो खोलनी पड़ती है और उसमें सिम को लीडर बनाना पड़ता है। अच्छा तो देखें एक रेप्लिकेंटो खुली है एमईएस के लिए, वो रिमोट मोड है। एक विंडो खुली है रिमोट मोड एमएनक्यू के लिए, ठीक है, दो एमईएस और एक विंडो खुलेगी जो रिमोट मोड नहीं है जिसमें सिम लीडर होगा। तो लेट्स से मेरी तरफ से सिग्नल नहीं आ रहा और आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप सिम को लीडर बनाएंगे और बाकी उनको फॉलो। तीन टेक्निकली तीन चाहिए। अगर आपने जब अपना ट्रेड डालना है और कॉपी करना है तो आपको तीसरी विंडो भी चाहिए। मैं आपको यहाँ क्विकली दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मैं विंडो खुली है
कि जहां से मैं सिग्नल लूंगा। ठीक है, एक थोड़ी सी वो लाइट पीछे वाली बंद कर दें, बंद यस। सो ये एक विंडो है, इसके अलावा कुछ नहीं खुला हुआ। ठीक है, तो यहां पर मैं जा रहा हूं राइट क्लिक रिमोट मोड, और मैं कहूंगा कि सिम के ऊपर ये आपका MNQ आ जाए। ठीक है, मैं इसको करूंगा राइट क्लिक डुप्लीकेट इनटू द न्यू टैब भी कर सकते हैं, और यहां सेलेक्ट कर रहा हूं MES। अब मेरा MES भी मेरे आप लोग मेरे साथ आ गए और MNQ भी आ गए। ठीक है, तो देखें बोथ विंडोज में मैं रिमोट मोड में हूं। तो देयर इज अ लोकल मोड, नेटवर्क मोड, रिमोट मोड। सो रिमोट मोड का क्या मतलब है? you're receiving signals. So MNQ ये ऑन है, ये बॉक्स ऑन है, और किस अकाउंट पे भेजना है। ठीक है, ये MES है, ये ऑन है, किस अकाउंट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेरे साथ। हाँ, अब आप कहते हैं यार कि जब मैं अपने ट्रेड करूं तो वो भी कॉपी हूं। ठीक है, उसका तरीका ये है, आप जाके एक और फ्लो बॉट की विंडो खोलना, न्यू फ्लो बॉट एंड सी। इसमें वो आपको एरर देगा कि एक और विंडो खुली है, याद रखें। अब वो कहता है कौन सा अकाउंट हो, इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो, और जब मैं सिम पे ट्रेड डालूं वो मेरे PA पे भी चला जाए। ठीक है, इसमें मैंने देखें यहाँ राइट क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पर आपको जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये रैप आ जाता है। आप अगर इसको बंद कर देंगे तो ये लोकल मोड हो जाएगा। तो ये लोकल कॉपियर हो गया। अभी कॉपियर चल रहा है रिमोट कॉपियर। Right now, you can turn this copier. It's a one-time cost you guys paid. You guys get the copier for free anyway. So you have a copier local or remote. So this is how it kind of works. तो वो डिसाइड करेगा कि लोकल है या वो। हाँ, ये आप डिसाइड करेंगे ना कि आपने अभी तो दो तो आप मुझे मॉर्निंग में दे देते हैं, MES दे देते हैं और MNQ दे दिया। कोई बंदा है वो कहता है यार मुझे सिग्नल नहीं लेने, सिर्फ जाके ये बंद कर दें, आपको सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये मोड में है तो वो लोकल कॉपी। एग्जैक्टली। तो लेकिन आप साथ साथ लोकल कॉपियर भी रख सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो आप जितनी विंडो खोलते जाएंगे, आप कहेंगे मैंने क्रूड ऑयल को कॉपी करना है, मैंने आप 10 विंडो खोल लें, नो प्रॉब्लम, पर एवरी विंडो की एक स्पेसिफिक्स है कि उसके अंदर आपने रखना क्या है। हाँ, कि एग्जैक्ट मुझे एक बंद ही रहना है। ठीक है सर, बेहतरीन है। रेशो MNQ MES done. So now I'm waiting for price to go to expected low area, and we'll decide how it works from there. Because of the so much volatility, we'll sit out and watch for a little bit at 9:30, because the stock market is quite a bit. ट्रेडर के लिए स्क्रीन स्प्लिट या सब कुछ दोनों चीजों को अपना जाता है, एक ही स्क्रीन पे आ जाए। एक ही नहीं, वो हर एक टैब पे, एक टैब पे। कैसा है ये सेटअप के लिए? अगर वो ब्लू ब्लैक है तो वो आपका नीचे जाना है। अब ब्लू ब्लैक में अगर वो DT पे जा रहा है, डबल, That's not. It still is okay. It still is, but it's not a true setup. एक ही ऑर्डर लगा सकते हैं। नहीं, जितने मर्जी लगाएं, ATM के साथ एक।
The price for both S&P and ES is now inside your S2. Price is in S2. Good morning. This is very, very not normal times, guys. This is not normal times at all in terms of trading. You know, in 20 years, the events were COVID, 9/11, maybe Israel-Iran war. When today, every day he comes to the mic, we have a new event. At 4 o'clock, it's like, how can I predict something? Because one day he will say events and tariffs. Maybe no tariffs in 2 days. Sir, S3 पे जा रहा हूँ, इससे पहले नहीं. Yes. हाँ हाँ. Nasdaq भी S3 पे. हैं? S2 तो मेरे आने से पहले बड़ी अच्छी कुछ लोगों ने ले ली थी, but it's okay, no problem. जिस हिसाब से जा रही है पता लगे extreme low पे चली जाए. All right, officially 5 minutes, but good morning. All right, let's see. 3 more minutes. Unemployment data is bad. So first thing is we check the news as the pledge goes, and we'll see what the news is. Unemployment claims are lower than expected, but quite a lot of people lost a job. They were expecting 225, but trade balance is kind of a good and bad news. So less people lost jobs. But we have news at 10 o'clock, guys, so we could have a little bit of a shock wave at 9:45 and 10 o'clock, and then nothing. Tomorrow FOMC, 8:30 in the morning. Hmm? Tomorrow is 8:30 in the morning FOMC. Sir, kal Friday hoga, first Friday of the month, non-farm. This will be rough. So it's going to be okay for a hedge? Yeah, hedge kar sakte. Hedge कर सकते हैं.
हेज का क्या मतलब है? ये दो अकाउंट ने, एक लेफ्ट कर दे, एक लेफ्ट कर दे, इनमें एक निकल जाता है। ठीक है, एपेक्स में सिर्फ लेकिन एपेक्स के अकाउंट महंगे हो गए, $73 का हुआ। मैंने लेकर रखा था जो लेडी को ओके, लेकिन उसकी जगह बेटर करें, उसी का ऑर्डर में बता देता हूँ। वो मैंने किया है हाँ। उसी का। हाँ, तो वो फिर एक अकाउंट या फेल होगा या पास होगा ना, लेकिन कोई भी डायरेक्शन चली गई तो आपको साथ ले जाएगा। तो आप एक ही अकाउंट पे दो ऑर्डर लगाएंगे ना, अगर स्पाइक आती है इधर की तो इधर ले जाएगा, इधर की आई इधर ले जाएगा, तो वो बेटर है ना। तो अकाउंट क्यों जाया करना। चार उसमें लगा दूं, मैं चार महीने के साथ। हाँ हाँ, एक टेस्ट करें कल तो बहुत ही जल्दी ऐसे, इसीलिए तो क्लोज ही करता रहेगा। मैं कल क्लोज ही नहीं हो रही थी, प्रॉफिट दिखाया लेकिन उसके बाद भी क्लोज कर रहा हूँ वो मार्केट इज ऑफिशियली। all right, 9:30 we're here. Let's see now. बॉटम ऑफ द फॉल। All right, straight to S1. All right, broken your S1. Waiting for R1, guys, before I do anything. For area trade.
Okay. SRE setup kind of gave us some points. Look, 1510. Back in S1, both market.
First bottom of the bar, I'm seeing. $50-20 में आज का रीचा सेटअप आया था, but it didn't work. No, मैंने लिया नहीं क्योंकि पिछली कैंडल सिर्फ 4 थी, so it wasn't a big one. So I'm just letting the market settle down to see, because I even missed the bottom of the bar on 30-20. That trade could have been done all day. Because of the move of almost 300 point on ES yesterday, it is too fast right now. So ट्रेंड ट्रेड क्यों बात है? अब ट्रेंड ट्रेड क्या हो रहा है? नहीं अभी कुछ कहीं सेटल हो जाए ना कल के बाद कि किस साइड पे इसने जाना है. अभी थोड़ा गर्म है बहुत माल. कल के बाद 300 पॉइंट ES गिरी है, 1200 Nasdaq. So उन्हें तब सेटल हो जाएगा. अभी न्यूज भी है ना, अभी 5 मिनट में न्यूज बढ़ आ रही है. 5 minutes we have news, guys. At 10 o'clock we have news, red news. So it's happening too fast. तो ये कितनी तेजी से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं. ग्रीन से रेड, रेड से I'm truly going to wait until 54.81 for expected low to decide something, which way it wants to go. हाँ, सुबह वो तो लेट आता हूँ मैं, बता दूंगा. News in, good morning, news in 3 minutes, guys. Be ready. It's a medium impact, and the next at 10 o'clock is high impact. So if you're an EA, no problem. Any PAs, just be careful. Big spike. Tesla is down $11. Google is down. Meta is pushing $50. Meta is down. Ooh. %7 Facebook lost its. Apple is down $21. Amazon. Only thing up is gold. Gold is all-time high, 3,200 almost. Two minutes to news.
1 minute to news. By the way, extreme low and expected low is so close together today. It is for ES. 54.66 to 54.50. There you go. Bit of a news. Let me see how the news played out. Refresh. Same as forecast, so no change. However, 10 o'clock is high impact. So let's wait and see. सर जलजला आया कल और अभी उसका जल मैंने अपनी लाइफ में 4 साल में 1200 नहीं देखी, मैंने 1000 देख ली थी इंटरेस्ट रेट। 1000 तो 3 दिन, अब 1000 अब 1200 यार। तो आप कह रहे हैं कि अभी मार्केट तेज क्यों है? अभी तो 10 बजे देखें क्या होता है। So I am waiting at expected low 54.76 zone to buy. मैं वो बना के आया हूँ, ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो जिस तरीके का मार्केट है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, If you want to know if you're getting a signal in, I'm putting a trade in for an area trade. Let's see if you guys get a signal in. Sim for trade hidden. 1 second. Let me go put in a signal in chart trader. Sim 1. Chart trader hidden. Any of you guys got order in? Yeah. At 5476. And MNQ, somebody got an order in. 1 second. MNQ has sent in the order. MNQ में फिर 30-20 को भी डुप्लीकेट कर लेना या 30 मिनट के चार्ट का डुप्लीकेट कर लें, because that's where the signal is gone in. So if you have a 30-minute chart, the area chart, let's look at the area chart. Let me close this. I don't need this. This. So I have MES, I have MNQ. This I don't need. No, because I'm doing an area trade, right? It's no, not even 30-20. It's you will see it like this. Just go if you have a 30-minute chart where the areas are, where the areas get posted, right? So let me open up a, let's say, MES and a 30-minute chart, just to kind of give you an idea, right? And here I will, let's say, turn on chart trader, and you will see my order has been placed right there.
So in your area trade chart, I have placed an order at right here at the bottom. So this is my expected low, right? So this is, let me just add my indicators on. ओके सो आपका ये एरिया ऐसे आना चाहिए, ठीक है? आपका एरिया MES में अभी एक सेकेंड, और दूसरा इसको देन आई विल डुप्लीकेट दिस इन अ न्यू टैब, दिस एरिया. So this area, now I want to set MNQ there. And you should see an MNQ where I placed an order right there on top of the bar. So my MNQ order is 18764. And my MES order is going to be 5476. That's where I've placed my two orders for right now. So you guys should have gotten, if you just make sure you have MNQ flow bar open as well. MNQ June, मैं आपका MNQ June, ठीक है? MES पे भी नहीं आया. एक सेकंड, पहले आपका फ्लो बोर्ड देखते हैं. आपने बॉक्स से नहीं चेक किया हुआ, लोग सिग्नल कैसे आएंगे? हाँ जी बताएं. ये लगा हुआ है ना? ये बस AES का लगा हुआ हाँ हाँ, है। MNQ पहले इसको कॉपी करें ना, ये करें और इसको इसको कलर इसका चेंज करें और इसको MNQ कर दें. तो इस तरह के एरिया चार्ट बेशक 30-20 पे ना देखें, क्योंकि वो कंप्रेस कर देंगे ना चार्ट. तो ये MNQ का नीचे लगा होगा, बहुत नीचे, क्योंकि वो लेकिन 30-20 पे मैं नहीं लगाता MNQ, भी लगाता ही नहीं हूँ मैं. सारे जो चार्ट्स आपके हैं ना ट्रेड्स, वो लगाता हूँ एरिया वाले, एरिया चार्ट पे. MNQ ठीक है, ये तो सही है. तो आप एक एरिया चार्ट भी खोले ना. अब मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा लगाऊंगा, क्योंकि आपने वो गेट मिस हो गया ना आपका. तो I will re-put that order in, no problem. So sorry. I'll cancel those orders now and redo them. So make sure आप कंट्रोल सेंटर में जाएं, न्यू में जाएं, चार्ट में जाएं, ताकि आपका एरिया चार्ट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है. चार्ट last price. Anything has to be changed there? I mean, 1 minute? No, 30 minutes इसको करें. Background and that. I'll resend it. I've canceled both orders. I will resend it. So please don't watch MNQ on 30-20. Your charts are going to get squeezed and then you're going to say, I can't see anything. So watch MNQ on 30-minute chart. So 30-20, don't have chart trader on. You will get your charts compressed. So let me send it to Cindy. Okay. लिमिट का ऑप्शन दे नहीं रहा. नहीं आपने टाइप इन करना है ना. जब न्यू चार्ट खोला था तो उस पे लिखा हुआ था कि अप्लाई. उस पे टाइम पे 30 मिनट कर लें.
And make sure you add the indicator of like the, so it shows like colors like this, so you know where I have the, I've sent you guys the signal. So there's a reasoning behind it. Why did I place my order there? So फिर पीछे पीछे हम आपके आ रहे हैं. क्वेश्चन ये होता है आपने ट्रेड लिया है कि नहीं, और ट्राई करें अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर प्लीज, सारों का फायदा हो जाए ग्लोबली. superareas.net पे हाँ, ग्रुप में आप कहें, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. Yes, yes. 10 o'clock news, guys, 4 minutes, so be careful. So इस तरह बना लिया चार्ट? नहीं, एनी टेस्ट नहीं, आपने खुद करना है, क्योंकि मैं आपको टीच करना है कि खुद कैसे करना है. Okay, let's do it again. New, if you have this, Daniel has actually set it up all for you. So you go to new, you go to chart. Okay. Here I will pick, let's say MES, right? MES, MNQ. So let's do 30 minutes here. यहाँ 30 करते हैं ना. Okay. Control center, new chart. आपके पास बना हुआ है? आप तो बनाने की कोशिश में. So press OK. It will open up a chart like this. नहीं तो नीचे 1 लिखा हुआ ना, 1 को 30 कर दें टाइम पे. So one last time, new chart, ठीक है? And then right here, pick your instrument, 30, and OK. All right, so we're here into this, and then right-click indicators, right-click indicator. Guys, 3 minutes to news. We are back into S2, and pick the indicator called Super Areas Algorithm, right here. So inside the indicator, you will see something called Super Areas Algo. S pe aayega. And then here you type in your username, password. So you will start getting these charts plotted. So now this is for MES. We will duplicate this for MNQ. हो गया? Algo. अब उसको double click करें और right पे username, password डाल दें. So now I have 2, one for MNQ, one for this. If you want to see them separate, you can move this in. So I can say move this into a new window. So I will do it slightly like this. However you feel like. One, 2 minutes to news, guys. Be very careful. High impact news. Apply करें. So now I have 2 charts, one for MNQ, one for MES. I don't need to see a lot, just would like to see as little as possible, because so I can see them in both windows. I'll turn on Chart Trader so I can see my order. Chart Trader here, and then let's say my account is SIM, Chart Trader here. So make sure Chart Trader is on so you guys can see it, and I'll call it hidden. After the account is selected, I'll do hidden, and I will do hidden as well, so it saves a bit of a space. All right, so now I have an MNQ chart with that area. I have MES chart with the areas plotted.
So anybody trading areas, this is your, main thing you need. Otherwise, let me save it so tomorrow it saves proper. Okay, now I'm about to send a signal here on MNQ and MES. All right, the news is done. Let's see which way it goes. Craziness. All right, S2, so. The negative news. Let's see. We don't care negative, positive. I want it to slow down inside an area. So lower. Purchasing manager index is low. So market technically should go down towards expected low. So I will, मुझे any testing quickly आपका set कर दूं. 1866. I just want to see your setup. Okay, this is you. First of all, you're trading ES. So I'm trading MES. So you will not get a signal here. Number two, let me double check here. You are on MES. Let's duplicate it into MNQ just to get an area signal. MNQ. Micros. MNQ. Now this is all set up. Last thing is your charts, where the area charts are. Where they close. You reconfigured a lot of templates, I see. That's okay, no problem. This is this, is this, is this, is this. Okay. I will do a chart for you just to double check. MNQ. New chart. MES. Type time. Minute. $30-minute chart. You don't even have areas. No, this is a custom template. You're not even using any of the standard ones anyway. I'll import it. Because I think you customize it for yourself and save your template, which is okay. Okay, that's fine. So I'll just enable inside them the areas. Okay, come on. Third expected low, both 18,760 and 5476 is my number. Okay. No problem. Done. File.
यहाँ अपना सुपर एरियस का यूजर नेम पासवर्ड डाल दें. So expected low is 54, night session low is 81, and expected low is 76. There you go. Now your areas are showing up. So I will duplicate this for M and Q. So at least keep these two open and save. And we'll turn on chart trader here for you on sim and chart trader. So these are called area charts. So you will now, if I place an order now, you should expect a signal here. So on my computer, I've gone and placed an order. Make sure everybody's box is turned on just to see the signal coming in. So we'll place an order now. So Nasdaq 18,763 buy limit and 54.7 buy limit. So now you have received two. If you look here, you see right here a buy limit, and if you look at Nasdaq at the bottom, you see right here. So I नहीं आए. ठीक है. M&Q की विंडो खुली हुई है, टैब ऑन है, सब कुछ ऑन है. मैं भी आता हूँ. So you're all done. So M&Q का expected लो. Expected. देखिए. Number 1 एक चीज सब दिखानी है. ये देखिए. नहीं बैठे MES आपका चार्ट किधर है? ठीक है. M&Q सब कुछ ठीक है. F अब आपके फ्लो बोर्ड्स का है. ठीक है. M&Q ठीक है. M&Q ठीक है. हाँ सिम या नहीं अगर आप उधर भेज रही है तो ठीक है. तो फिर यहाँ उधर देख लेना जिस अकाउंट में भेज रही है तो वो दिखना है. तो फिर विजिबल वो होना चाहिए जिस अकाउंट पे आपने ग्रीन किया. या नो प्रॉब्लम. हाँ जी. सो ये ऑर्डर्स लगे हैं. सो 547576 is my entry. So 187. थोड़ा सा expected low के. दोनों एरिया तोड़ता है. ये तो ऊपर आई नहीं है. ना थल्ले जाती है. So more chance it could go to extreme low, possible. ये लगे हुए दोनों सिग्नल वो देखें सामने लगे हुए. All right, we're almost into very soon to expected low, so I'm waiting at 54.70, almost 6. Let's see.
Let's see how far the market can push this. तो सर इस तरह हम लोग भी खुद ही भी कर सकते हैं, 2 चार्ट खोल के ऑर्डर दोनों पे लगा सकते शायद दोनों पे क्या, चारों पे लगाए, नो प्रॉब्लम। हैं। ये मैंने सब कुछ लगाया है इस पे, ऐसा ही है। और दूसरा लगाया ये MNQ पे हाँ ठीक है, ठीक है। वो कर सकते हैं। एक में करें, बिल्कुल हो सकता है। वो टैब डिफरेंट है ना, वो चार्ट डिफरेंट है। लेकिन अगर उसको क्लोज करना हो तो एक ही में क्लोज जाएगा, दोनों टैब पे अलग अलग जाके अलग अलग क्लोज होगा, क्योंकि उस चार्ट का डिफरेंट है, उस How come you didn't get it on yes. Good morning, ji. Yeah. All right, we're coming very close to our area, guys. 82, almost close. Night session low. So upper order it as 54.76. एरिया में 10 पॉइंट का डिफरेंस है, 54.76 to 54.66. See, it's almost here, sir. Almost all here. Nasdaq is a bit far, but Nasdaq is in S2, but ES is very close. No. All right, we are very close. Hopefully, it will go and pick us up. Because yesterday, so that's why I put one tick above. Yeah. So let's see. If it bounces from here, then we will change our entry. The home sale went down. So it has broken yesterday's low of night low is broken, and we are gone from 79. No, not yet. Still one more mid band coming. Because Nasdaq is stuck at S2 and ES is almost expected low, 300 points for ES. Still has a bit of a energy more to go down. We'll see.
problem is if Nasdaq starts to push down to expected low, it'll break. Because Nasdaq is still almost, still haven't given hope yet. This 30-minute, 20 minute band is still. $76. I'm gonna move it down slightly, guys. No. So it went up from 79. Yeah. So we have our order placed at 54.75.75 on MES. That's the expected low area for today. Let's see. Because Nasdaq is now, is it gone? Nasdaq and ES are kind of out of sync completely. One is above S2, so. On my chart is not showing I connected. Chart trader on है right account है Yeah. भेजे तो कितना कहाँ से गई है लास्ट टाइम 79 से गई है yeah it should go and come and test S2 S3 one more time so I'm still at 54.74 yeah so I said 54.76 actually I should say let's see 920 to 763. We got quite a bit of distance on Nasdaq. 920 to 763, almost 157 divided by 5. That will put us at around 32 from here. 54.86 minus 32. Very close to extreme low. Let's see. Not a single trade so far for me. पहले मुझे ले जाए यार फिर जिधर मर्जी जाए मेरे को मुझे ले जाए लास्ट टाइम कल भी एक्सपेक्टेड लो 3 पॉइंट से रह गया सो आपका करेक्टेड है सर मुझे तो किस पे एमईएस पे नहीं आया सर से ना करें फ्लो बार्ट दिखाएं चार्ट ट्रेडर मशीन नहीं चल रही ठीक है ये भी सही है एमएनक्यू भी सही है
आपके चार्ट्स की चार्ट ट्रेडर नहीं टर्न ऑन एक दफा चार्ट ट्रेडर टर्न ऑन करेंगे उस चार्ट के अंदर ताकि मुझे all right one more time trying to test night session low or let's see if our 76 gets respected. $81 78 please don't hopefully this is the last attempt to go and pick me up after mid-band it went down go down more. All right, come on, don't. ये मेरी किस्मत जो है ना आ गया अभी नहीं आया सर अभी नहीं आया अभी ना कहें मेरा नहीं ऑर्डर पिक हुआ नहीं हुआ जी मेरा नहीं हुआ आपका पिक हुआ मेरा हो गया जी। आपका ऑर्डर पिक हुआ था हाँ जी, हाँ जी। ठीक है फिर अपना प्रॉफिट चेस करें अगर किसी का ऑर्डर पिक हो गया जी मैं तो मेरा ऑर्डर नहीं पिक हुआ मैं क्या कर सकता हूँ डन 6 पॉइंट चले गए मेरा उसमें हाथ नहीं आता। नहीं वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है मेरा तो जिनके ऑर्डर लगे हुए वो नहीं पिक हुए अभी 30-20 जैसे ट्रेंड So I'm still in the same order. Anybody who got picked up, please get out and get your profit out. You're already done your 6 points from here. 6 point. 5.25. No. It's just because all computers are there. You have an order. Maybe your key was ahead of me. So like that's look at that 7 points from the area. This kind of is annoying. So I'm moving my order slightly. Yeah, I'm leaving it at 76. It's okay. Anybody got an order? Please take your profit and exit. 5.25. Good. Come on, man. Sorry, नाज़म भाई. नहीं मैं अपने सारे 50 अकाउंट इसी पे लगा के बैठा हूँ. Let's see. Now I will move it in slightly lower. I'm gone into 74.50. Because if it makes a divergence, let's see. I'll wait and watch how far it falls. Many order, I've closed it because it's so close to 76. I want to see how far the divergence will go. Then I'll enter. मैं तो सर 76 से वापस चली गई तो मैं तो नहीं दोबारा लेना ना 79 right now the market is still now dancing and deciding I may take a buy bid anytime but let's see if this bar will decide do I enter where all right it's down to 76.25 that's my higher low if it makes a candle to the upside then we'll jump in or if it makes a lower low let's see come on double bottom at 76 75.50
There's a bit of a divergence. I may take advantage of that. But I need a black candle to the upside first. फिर इसको बंद करें करें नेक्स्ट एक्टिव ऑर्डर आपके ऑर्डर फिर कहीं लगे हुए हैं, फिर वो शो नहीं कर रहे, तो ऑर्डर्स में जाके हाँ उसको कैंसिल कर दें. I'm taking a buy bid, guys. I'm entered. I have entered. I'm in. I'm done, and close the trade. Good. Buy bid. Hopefully, if you are chasing, please chase. Take. Done. ठीक है जी, अब चेस करें, अगर चेस करें ठीक है. मैं तो 4 पॉइंट रखा हुआ है उधर एटीएम. तो आपने लिया कोई ऑर्डर? सर वही टेक प्रॉफिट में जाएं. सो वी आर डन द एरिया ट्रेड. सो I was just waiting for divergence to get confirmed on 30-20 and I took that trade. So perfect. Look, 25 points. So I hope everybody done. 2 point, 1 point, doesn't matter how many points you got, but your area trade is done. And look how far that thing shot up. Almost 18 points. Okay. So follow. So NBT signal, this is a problem. So idea is your guys are learning where the area trade is, right? So when to get in, where to get in. So now we will take expected low bottom range. If you're taking an area trade, uska kuch mila? अभी दोबारा रीस्टार्ट किया मैंने ले लिया कुछ ले, ठीक है, ठीक है. You took that trade. Okay, good, because it picked up for you, right? Maybe. So आपने किसी और ने लिया trade? Manual. 2 point. ठीक है. So we good. Yes. To the dot, guys. It can't get any better than this. Out of trillions of dollars, computer predicts a number 76, and how can it 76 can happen? So it bounced at 76 to all the way to like what? 94. Huh? It happened because you said No. no. There is ऐसा होता, मैं किसी बीच पे बैठ के ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पर वो वीडियो में देखिए था so sorry, 2023 was my most profitable year because I used to trade alone, completely alone. Right now I have to do any desk, I have to put a chart. 2024 it was a kind of okay, but now mostly I'm focusing on teaching. Because 2023, if you see all my TikToks, 7 grand a day, 8 grand a day, 10 grand a day, go and watch my TikToks. But I used to trade alone because I don't have other distractions. But it's okay. No, it's okay. Now it's more of a job than it is. So it was okay I can कुछ मिल गया ना, बस ठीक है. चलो भागते चोर की लंगोटी सही है. So कुछ ना कुछ तो मिल गया. MNQ सर बैठेंगे हम, MNQ बैठेंगे. नहीं आप जाएं उसको टूल्स पे, कंट्रोल सेंटर पे. मेरा अभी आप पहली वीडियो नहीं देखी ना आपने? पहली वीडियो नहीं देखी ना? कोई वीडियो. How to update contracts. All right, no problem. So computer predicted 76 as to work as a resistance. Great. But now we will take the bottom range of the area, right? So why did I decide to go with the bid order? Because I was on that candle, I saw 30-20 divergence. Price went down to 76, but look at the strength did not go down. So I was hoping if I can join the bid, it will just take me up because there is a divergence, there is ES, there is expected low, more chances are, and it shot up 22 points from there. It's okay. I did not get a single point today so far. No problem. Huh? Zero. क्योंकि मेरा order नहीं pick हुआ ना. No, I got the bid in, but at that time I had a wrong account selected, so it didn't attach everything. हाँ जी, चलती गाड़ी में बैठना हो तो buy bid buy ask, sell bid sell ask. So market तो नहीं दबाना ना मैंने, तो buy bid buy ask.
अगर से मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूँ तो फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ हाँ तो दवाएं ना क्या करेंगे वो ऑर्डर लगा देगा हाँ तो ऑर्डर लगा दिया उसने और उसको क्लोज ना दबाएं क्लोज का ओरिजिनल लग गया अच्छा उन्होंने अभी कहा है सिंपल यार एक्सपेरिमेंट तो ना करो भाईजान ना Very good. That's good. अब सिंपल बाय बिड सेल बिड बाय ऊपर जाना है बाय बिड दबा दें बाय आस्क दबा दें क्लोज करना है तो सेल बिड सेल that's so it's better than closing from a market price सर आज मैं एक्चुअली आज माइंडसेट में हूं कि मैं सारी सिंपल ट्रेड कर रहा हूं हाँ द ओनली रीजन इज आई वांट टू टेस्ट एसआरईएस ठीक है नो लेकिन उसके बाद बता क्या हमने इस वीकेंड पे बैठे हुए थे गप लगा रहे थे डिस्कशन हम सारे करते हैं ना so the idea came which trade out of 14 type of trades has the lowest stop loss so we came up with a figure right so we're like discussing shooting the crap and look if you take an area trade right you got to give yourself 5 points of breathing room right if you're taking a mid-band trade on a 15-10 you got to give yourself 5 points if you're taking a SRES trade you have to give yourself 8.5 points that is crazy right if you're taking SRES on if you're taking a breakout maybe 2 points right the lowest stop loss is once you have SRES confirmed bottom of the bar is 3.5 points so you got your setup higher high higher low first lower high you want to sell okay but don't get into the candle right away you know how we are doing we're doing a buy stop or sell stop and going through the candle it's better and optimal if you move your orders at the top of the bar so coming back to on the screen explanation is because we're trying to always come up with the most profitable trade in a stop loss so if you watch this we have higher high higher low first so setup is here so rather than I would sell here I would go and place my order on top of these bars bottom up see if I want to let's see if I want to buy right now something let's do buy limit so bottom of the bar I placed my order let's see how it it does it didn't pick up my order koi ATM mein abhi nahi lagai dekhiye my order got picked up and look this is crazy isn't this crazy it's an MES it's a 3-point trade so bottom of the bar I got 2 points so you have to be the bar has got the least number of stop loss exactly or top 3.5 but look this is a 5-point trade on a bottom of the bar on 15-10 so you can do bottom of the bar my only question is what is the probability of what is the success of your 90% if you're taking a bottom of the bar after SRES on the first reversal is the highest probability maybe 97% of course nothing is 100 so but the highest probability is on a after the SRES setup is done on 30-20 go at the bottom of the bar start placing your order and as long as your strength is reasonable if your strength is 99.5 I won't take bottom of the bar maybe I'll take a mid band right so because yesterday I actually checked I sat around a couple of hours in the last 4-5 days there were almost around 42 setups for SRES in 30-20 out of which 34 worked and 8 kind of just give 2 or 3 takes Yeah. about it. So I was just thinking that 81% of time it is kind of going in your favor. SRES. SRES के बाद ही लेना पड़ता है तो मैं टॉप ऑफ द बार में मैं एक्चुअली वो ले रहा हूँ SRES. So it's a missed opportunity, missed it, it's no problem. It's okay. As long as I didn't lose money, I'm not
To be honest, when you watch your charts 16 hours a day, nothing makes you exciting anymore or sad. All right, I got in, I lost. 3.5 is the stop loss. Stop loss for 30.20. Because why? Let me explain one more time since there's no trade, 14 ticks. So, Let's say it again, please. Please repeat it again. sure. Well, सर प्रॉफिट 2 टिक्स तो मिलते पूरे एक बार आपका 20 टिक्स मिल जाते हैं 20 टिक्स. So how can I do this nicely so somebody can take a picture later? All right, let's do this. 30-20, right? Yes. Five or 10 bars. You have a price that's going up on 30.20. It made a higher high. 30.20, right? Price starts to come down and makes a black candle. And your bars colors will change to red. But this is your thing after the SRES setup. Yes, yes, truly. You have a higher high, then you have a black candle to the upside. Let's do it in exact markers so we know even the colors. Higher high, higher low. This is how the traditional setup is, right? You have a black candle. Right? What will happen next from here? It will make a higher low, right? So now again you have green bars because it starts to go into green after this. So if it breaks this right here, you will have a higher high, right? So this is your swing. This is your price. Actually, it will come down like this. Swing, retrace, and then you will have an extension, right? So far everybody is with me, hopefully. How I'm trying to draw it as accurate as possible. Now it will write your first lower high in black, right? So one possibility is that you will have a black candle here to the downside now. And one possibility is you are right here, you take this number minus 8.5, and then you have a black candle position that where could I enter? And so one possibility is you will do a sell stop. So that's for your one possibility. No, not a breakout. This is a black candle to the breakout is right here. So your next possibility is you will. Sir, trend का मुझे परवाह नहीं है SRES में. I don't care about the trend. Trend changes too. That's a different trade. Swing, retrace, extension, because it can change at a different places. So one possibility is you will do a breakout trade. You will do a buy stop that, okay, if this becomes a higher high, I'm going with it. Second option is you take this sell stop, but problem with this trade is your stop loss is 34 ticks. So if you entered here at and SL is 34 ticks, because what is SL 34 ticks? You're waiting for another black candle. And let's say your TP is, I don't know, 8 ticks.
This is wrong, in my opinion. It is too risky. Yes, it does work. Normally, when the candle gets formed, right away gives you 2 points, 8 ticks. 8 or 9 out of 10 times it will work, no problem. But what happens is the one time it doesn't work, it will take your 34 ticks. So the ideal situation, as per Daniel, and we have all discussed, is you skip this trade. Now you will have bars to the downside, right? Next bar is here, next bar is here, next bar is here. You start putting a sell limit orders right here. So you say, all right, now I have swing retrace, no extension. I have a candle to the downside, but background color is important. Then you want to make sure this has made a lower low first. So after a higher low, we are waiting for what? A lower low. So it has to break this number. It's a lower low. Once you have a lower low, once you have a background color that is in your favor, you will start going and then you will sell here. So this is a sell limit order. And if it picks up here, so this is, now I like these type of orders. So if it picks up here, from here to here is 20 ticks. All you need is 1 bar and you're done. Literally your whole scalping situation is done. Same thing in green. So you will do a sell limit right here. So One question. yes, See, the times when we place a order over here, yes, but the mid band is up here. that's What fine. it does is it goes to the There- mid band and it might Possibly, So possibly. 2 points stop loss. Right? 3.5. Yeah. So if you take this top of the bar, make sure your stop loss is at least 3.5, 3.5, or I think it's 14 ticks. 14 ticks. Do you think that stop loss is better That than is 24.30? rather than you take this risk, you take this risk. Because here, if this picks you up and comes down fast, you are really going. Okay, you missed the top of the bar. I have a scenario. You were looking at the bar and you see a black line here. That's called the rejection wick. And the longer the wick is, you see this, sometimes you see this black line. So ideal was you were supposed to be sitting here as a sell limit and you open the computer and then right now the price is somewhere around here. And you see this is great. Go right here, next bar, and do a sell stop. Now you do have a chances you will get 4 ticks for sure. Because this rejection wick means I will continue to go down because it didn't break and make a new candle, right? So that's where I really like sell stops after watching this rejection wick. Because you missed it. You saw, oh, I missed the top of the bar. What can I take now? So you should take a sell stop here. If you have a buy stop, if you have a rejection wick to the bottom, you do a buy stop, right? So this is the most ideal setup, in my opinion, in my history of taking. Of course, I take area trades the best. If I had taken 76, I would have taken 5 points today, at least minimum 5 points from expected low. This is once in a, यहाँ से तो miss नहीं होनी चाहिए. कल price घूम रही थी expected high पे, and I said, guys, just close your eyes and do 1 micro sell. अगर उसी में रहते 4:25 तक तो $1,000 $2,000 बन जाने थे, क्योंकि वो ट्रम्प आ गया ना बीच में. So, but it's okay. I think he took like 50 points. I took yesterday well over 78, 90 points because 1 micro was just shot it. It kind of fell from expected high. So yeah. वो इसका बॉटम ऑफ द बार, इसकी आप ले लें फोटो ताकि मैं फिर दूसरा क्लियर पर डे डिस्कनेक्ट करें. Per day disconnect. So this is the best setup because these days I have a lot of messages coming in that mid band is difficult. 30, 20, 15, 10 mid band is too fast. I have to watch so many things and I gotta watch triggers and this and that, right? So लोअर हाई के बाद जब नीचे आ रहा है तो लोअर लो जैसा मैंने कहा
That is a good indication कि lower low बन जाए उसके बाद आप top of the bar Yes, yes, yes. उसको बनना पढ़ना है सर. middle of the bar pick करो दो टिकले तो possibility ज़्यादा होती है Sorry. जैसे middle of the bar एक बार दो टिकले ले लेना हाँ यार वो middle of the bar फिर 50-50 है वो इधर चला गया या इधर तो ना ना correct तो उसको पूरा हो लेने दे वो ज्यादा बेटर है. हाँ जी लो का वैलिड है वो अब प्रीवियस लो इज वैलिड. So it's testing expected low one more time. Take expected low on Nasdaq, please. जी जी. Now we are in 71 zone. सर 760 से वो तो वहीं पर पिछला ऑर्डर तो वही लगा हुआ है 812 पर तो आ गया पिछला लो तो रात का तो तोड़ दिया उसने. अब 66 पे लगाएं सॉरी अब 66 पे लगाएं 66 पे लगाए ना वहां पर बॉटम उसका रेंज ले लें. एक सेकंड मुझे थोड़ा सा आपको देने दें 819 और 760 59 divided by 5 so yeah 66 could work as a good figure. आप लगा लें मैं लगा देता हूँ 66 पे MES पे लगा देता हूँ. So MES 66 everybody should gotten a signal on 66. So let's see by then your because Nasdaq is heading to 805 so very close only 40 points left for our expected low and they're kind of synced yet. Let's see. आ रही है जी almost 66 because Nasdaq is almost into 760 zones. And so we'll exit if the price goes below 66 minus 5. Almost 2 points and let's see. Tesla 263, Tesla really, Nvidia down, Tesla down, Google down. Biggest hit is Meta at $50. Will I take a buy bid? No, not this time. No. I don't care how far it goes. Let's see. Was 30 points to go and then
It says 68 to 66. Come on, 67. All right, we got picked up. Let's see. Because Nasdaq is, come on, Nasdaq is not there yet. We're out 2 points so far. If anybody wants to take over, close their trades, I don't mind. It's fine. I will hang in there for a little bit. Almost there, but Nasdaq is 770, 769, 68, 765. So Nasdaq is struggling slightly. So we got almost, we're at a break even at the moment. Let's see. $765. We got a point out of it. So far I saw a point, but Nasdaq is not pulling up. Touch 760 maybe, then Yeah, maybe 760 you touch and then pull up slightly because we are at 765 it went to. Trying. 69, 68, 67, 64 Nasdaq, 60. We are almost in sync, but we saw 64. Not yet. Come on, truly struggling. $18,764. I think Nasdaq is starting to pull up, so maybe you'll take over ES with us. There you go. We got some points coming in ES. We got a point at least, but come on, rapidly go Nasdaq back up. So it's up to you guys. You want to exit, not exit, but I'm holding. Nasdaq is going, but, Yeah, Nasdaq is a problem. Is just their sync is. You saw a point. $63, $62. Let's see. सर देखें वो 62 तक तो चला गया है. अब आप देखें मैंने निकलना है. अगर उससे 60 तक तो वेट करूंगा मैं. most likely bounce होगा. नाम होना चाहिए. लेकिन कितनी गिर गई है. ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट गिर गई है. हाँ नहीं कल से. It's pulling up, but Nasdaq has went to 62.
All right, Nasdaq pulled back up, but it's up to you guys. You want to exit, not exit? We are at a break even right now. Completely up to you now. ठीक है, no problem. I'm holding. There you go. 1 point, 2 points done. So 14, 3.4 done हो गया. I got out of the trade, guys. So 2 points I got, and it's okay. It's just Nasdaq kind of went to 762, but it's okay. We didn't get our Nasdaq order get in. उसके बाद कस्टम स्ट्रेटजी थी वहाँ से आपको जितना पहले प्रॉफिट से आप डाल सकते हैं। It's okay. 2 points, we kind of missed it. Now it should shoot up to at least S2. That's the goal. Nasdaq is done from, I don't know if anybody took a buy order, market order in Nasdaq, but 2 points is, there you go, shoot up ho gaya ji. Maybe Nasdaq go test again, but I doubt it. अभी एक दफा Nasdaq फिर जा रही है. अब किसी ने बाय करना है 60 से लो से लीजिएगा. 60 को maybe a divergence trade. So it touched the mid band, came down. ये बॉटम ऑफ द बार सर ये बॉटम वो नहीं है. ये अभी ये SRE का सेटअप नहीं है. लेकिन अब यहाँ से बाय बिड कोई करे तो ले लीजिए जी. खत्म हो गया. 762 2 पॉइंट से क्या मसला होता है यार. If this is a rejection week, we are going far up. Because let's see, if this is a rejection week, it should shoot to at least S2, 54.96. Starting to pull up slowly from Nasdaq. जा रही है जी Nasdaq. So this is called the area trade. मैं उधर साथ साथ लेकिन मैंने आपको 2-3 दफा ब्रेक इवन के बाद कहा कि हौसला तो रखे थोड़ा सा कि मैं सिर्फ वो क्लोजली 762 वॉच कर रहा हूँ कि अब यहाँ से इसने बाउंस हो जाना है और वो ले गए. ये आप ब्रेक इवन पे आए हो ना बाहर थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि एरिया ट्रेड में आपको थोड़ा सा तो हौसला रखना है कि इट मे गो एंड बाउंस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड टेस्ट इट, राइट. सो हाँ आपका 5 है ना. या ठीक है, नो प्रॉब्लम. ग्राफ फिर अब थोड़ा वेट करें. So now it's deciding, does it want to hammer more people to the down? looks like it's gonna. सर एरिया हो चुका है. Next area, Nasdaq 710. Don't take 62, please.
शूट किया break, तो ये अब एक्सट्रीम लो की तरफ 50 लीजिएगा जी, अगला एरिया, नेक्स्ट एरिया इज 50। close हो गया, sell भी किया, डाल के आ गया जी नीचे, बैक इन, एंड इट शॉट बैक अप आफ्टर द बिड, just like what happened in the previous instance. Bit of a divergence. You can probably, the moment divergence gets confirmed, you may want to take a buy bid. After the divergence is confirmed. Because the next candle was 11 o'clock. So let's see, it is open in green so far on 60-minute and 30 minutes. So Nasdaq went to 758 though, and 758 to 7710. So actually 760 to 15 points did come though, by the way. This bar will decide just like the previous area. If नहीं बाय स्टॉप मुझे मिड बैंड क्रॉस करेगी तो मैं बाय बिड लगाऊंगा, because डाइवर्जेंस की लाइन आ जाएगी ना. Nasdaq has gone to 758 and 880. अब एक कैंडल पे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि and 3021 candle. नहीं ये भी आ गया ना, चलें फिर ये भी आ जाएगी पीछे, थोड़ा रिट्रेस के बाद आएगी लेकिन so this is where it tests your patience in the area. Like, do you have the strong enough courage to believe the area? But the next stop is at 5440, by the way. If anybody, it's not that far anyway, 8 points. So that will push us in the bottom range of Nasdaq, and it will push us in the bottom in extreme low. सर आप ट्रेड ही सिर्फ डाउ किया करें, मेरा ख्याल है. Just 5% Nasdaq is down and 4.5% ES is down. 102 for Tesla. Down to 102. No, Nvidia, sorry. Tesla is down $20. Everybody's just selling. हाँ एग्जैक्टली, गोल्ड से निकल रही है, गोल्ड ऑलमोस्ट 3150 पे चला गया. It's like somebody took out all the traders stuck on that one candle. But that's why we go with the areas and rather it's we wait for the number, guys.
इन्होंने लगता है चार्ट सारे बंद करके यस कर दिया है। ये क्या? हाँ ओके, लेकिन कंफर्म हुई नहीं अभी। नहीं इधर डाइवर्जेंस आई, लेकिन वो अभी needs to maybe go to lower version. तो यहाँ दिखाएगी कि मैं और नीचे जा सकती हूँ या there you go, 750, 747. Next area is 50, guys. शायद एक और डाइवर्जेंस बना के जाना, तो इसको S2 तक तो एटलीस्ट रिवर्सल लेना चाहिए। लेट्स सी। Nasdaq went to 744 so far. Seven 54, 50. EF का एक्सट्रीम लो लें। हाँ ले लें, लेकिन वहां से भी कुछ पॉइंट मिल सकते हैं आपको। राइट नाउ मार्केट थोड़ी सी ना गिर के भी थक गई है ना, उसको थोड़ी ब्रीदिंग चाहिए ऊपर की तरफ। Let's see. Nasdaq went to 720, didn't go to 710. Yeah. 710 यार 720 से आ गई है, तो हाँ 720 से तो आ चुकी है। Let's see, another mid band is tested. यार 710 ले लें, लेकिन अगर उससे नीचे 35 पॉइंट चलेगी तो स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 710।
बैकग्राउंड चेंज होता है तो जा सकते हैं 30-20 में। बॉटम ऑफ द बार से। लेकिन पहले SRES का सेटअप पूरा हो जाए। अभी वही। I need to see a first higher low before shooting up. But भाई वो वाला लिए नहीं। वाला तो नहीं दिखा। $33.20. एरिया में बैठने का ये थोड़ा सा फायदा होता है कि you make I got out now by the way on my original accounts. So अब आप मुझे any desk दें ताकि मैं आपका ओसीओ को बता देंगे। अच्छा OCO 30 सेकंड वेट कीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन। नजर भाई अगर 5 मिनट दें इसका रिवर्स पहले बता दो। हाउ वुड दिस रिवर्स वर्क? SRES का रिवर्स मीनिंग के दिस इज when you want to buy sell at the top of the bar, but please so let's rewrite certain rules for this. Number 1, SRES confirmed. Ask yourself, so I have a higher high, I have a higher low, and do I have a lower high? Ask yourself this. I have a higher high, I have a higher low. Do I have a lower high? Yes. So if you said yes to yourself, then you will start placing your order at the top of the bar. So this is where it will be the most effective. Yes, you can take any top of the bar. You can enter anywhere. But if you're asking for me, what is the perfect setup? SRES is confirmed. I'm taking higher high, higher low. Do I have a lower high? Yes, I will enter. You can say enter from. Exactly. So what is my BG? Background color has to be, of course, in this case, red. Because I'm hoping that it will be going, because more probability my trend is with me as well. And the last thing is sell from where? Top of the 30-20 top, and stop loss must be 3.5 or 14 ticks. You can set your TP to full 20 ticks, maybe like 8.5. It's up to you. Some users take 8 ticks, some take 12 ticks, some take 15 ticks. It's this, but this is the most ideal setup anytime. If you want to do this in 15-10, you can. However, 15-10, everything is half. Your stop loss would be 1.75, but rest of the things stay the same. So this is called an SRES. So trade name, it has a name in Daniel's videos. It's called retracement divergence. So what will happen here? When you will sell here,
None of the moving averages will have your strength will be at the bottom. So this is a retracement. So the price is retracing top of the bar. However, your strength will stay something like this. And your BBs will they won't spike up. So this is the actual technical word for this is called a retracement divergence. Why the word divergence? Price versus BBs. So your Bollinger Bands, your RSI, your moving averages are not going up. Price has gone up. And retracement because price is retracing. Any questions here before I wipe this out? It makes sense? 30, 20, 15, 10, 30 minute, 15 minute, doesn't matter. This works. This is a universal law of trading. Is swing, retrace, extension. You have a swing, you have a retrace, you have an extension, no. And then we're going to change the trend to the bottom size. Okay. Can somebody forward me this picture? I know people are gonna ask me. अगर किसी ने अच्छी picture बनाई है मुझे भेज दें. Status, मैं status पे लगा दूँगा. और या super areas पे फेंक दूँगा. हाँ ये तो सारे बेचारे nil void. All right. Okay. Now I gotta think, how do the bars look like? We are going up. Oh no. हाँ पहले red से शुरू करेंगे. So your bars will start to come down like this. So you have a lower low, and let's do this in black because you get the colors in lower low. Of course, you will have a black candle to right here, right? So after the black candle, it'll make a lower high and थोड़ा सा ना इसका वो बना दो. यहाँ आ जाते हैं ग्रीन बार्स. ये हो गया. आई थिंक मैं सारे खोल रहा हूँ. लग जाएंगे. ओ कोई बात नहीं. हाँ तो अब नहीं करेंगे. हो गया. यहाँ बनेगी ब्लैक कैंडल, राइट. फिर बनेंगे बार्स नीचे की तरफ. ये सेटअप बनता है आपका. लोअर लो, लोअर हाई, नहीं, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो. हायर लो के बाद ऊपर जाएगा. हाँ, अच्छा यहाँ पर ऊपर का पता करना है, नीचे का ऊपर ठीक है. सो हायर लो. एंड यहाँ पर आपका बना असल में चौथे बार कम बना है. हाँ. अच्छा थोड़ा सा खींच लेते हैं नीचे. So just to make sure that this makes it later. It cannot go below this. So I just want to make sure it doesn't go below. So That's lower high. This is your lower low, lower low, lower high, and it didn't break. So you will have something in the called the higher low. So first blue sign will come in. Everybody with me so far? You have a lower low, you have a lower high. So first trade is your breakout trade. Your breakout trade is I will do a sell stop here. That if it breaks this, I am going with the momentum. However, you will have a black candle now around here, and your bars are starting to be green. All right, so you have a lower low. So this, it means my trend is now changing. You have a swing, so this will make it a swing. This is your retrace. This is, there is no extension to the previous lower low.
This would be your extension. And finally, you will place your order right here, bottom of the bar. So buy limit orders. So now you're buying limit. So price is coming down, lower low. Price went up, touch maybe mid band, made a higher low, or it doesn't have to be touching the mid band. Sometime we'll make a lower low, background color will change, and still you have a lower high written because it didn't break the previous, right? So price come down, you will see a first blue. That's your cue that, hey, I'm about to go up. You will wait for the black candle and then place your limit orders at the bottom of the green bar. So that's called this, or that's all. So now you can have two orders. You can do a sell stop. If the price makes an extension, I will continue to go down, or I will do a buy limit to go up. Again, your stop loss is 3.5 or 14 ticks, or in TP, whatever, 2 or 8 or whatever. If you want to even do 12, 20 ticks भी लगा सकते हैं. पूरा bar 20 ticks का है जी, 8.5 का or 20 ticks. So this is your stop loss. So this is 30-20. If you're doing this in 15-10, you're doing 1.75 or almost कितने ticks बने? 7. And you can take 1 point or 4 ticks, or one bar is 10 ticks, so you can take 2 points or 8 ticks. It's completely up to you. What TP do you want to set up? So this is your traditional setup of is SRE confirmed? Yes. So SRE is confirmed. Is confirmed? Yes. Do I have a lower low, lower high? I have my higher low. I have my first higher low, because some users are technically entering right here at the black candle at the 4th bar, right? But that 4th bar can be slightly risky, because what if it makes a black candle but doesn't continue to up there, right? Most of the time it does. Yes, we're like, all right, it's taking me up, but if it doesn't, its best entry is at the bottom of the bar, retracement divergence, put a 3.5 point stop loss. So if from here I make another candle, you know, the best trade I have seen, makes a black candle, comes down, and then you go up. Like so, the moment I have a black candle after the 4th bar, this is the 5th bar bottom, you start placing your order. But make sure, don't do this. You say, hey, every black candle. Yes, you can do that, but it will not be a successful trade. Maybe. So once you have an SRES setup done, at the 5th bar, start placing your order. And when not to place this order, because you enter, you're like, all right, I don't see a rejection wick, but the price has gone so high that your strength has like gone to like 98%. It can still work, but you know, then better trade would be at a mid band. Then a mid band would be a better entry. So this is the setup for SRES that is happening when you want to go long. If you yes, so you're 100% right. So next bar comes, it didn't pick your order, move it here. If the next bar comes, move it here. This is the most successful and easy trade in the high volatility market. Like market like today, impossible for me to touch mid band. It touches mid band for like, you know, you just can't, right? So this is a little bit of a smoother trade. So best option is 30-20. सर आप 50 आप मैं एक बात करता हूँ प्लीज यार, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ ना उसको विगरस टेस्टिंग में किया करें कि यार मैंने सिम अकाउंट खोलना है, मैंने देखना है कि अच्छा आप पता क्या करें, पहला इसका मैं रेकमेंडेशन देता हूँ, पहले तो बॉटम ऑफ द बार लगाना शुरू करें ना, पता क्या होता है, ठीक है सिम है ना, फॉरगेट के कलर का है, आपको पता लग जाए मेरा बॉटम ऑफ द बार ट्रेड क्या होता है, राइट? सो लगाना तो शुरू करें ना, होता है कि सिर्फ देख रहे होते हैं, कोई भी लगा नहीं रही होता. और यहाँ पर नाउ आई विल टेल यू द अदर वन व्हिच आई एक्सप्लेन.
you see this black line here, and you're like, all right, I just watched this. SRE setup came. I have a rejection wick. Price is around here. You're like, all right, I'm not gonna miss this wave because this is a huge rejection wick I saw. I missed that trade. Go on top of the next bar, set up a buy stop. Still okay, like you still have a long stop loss, but the chances are this rejection wick means I will at least get my 4 ticks out of this. So a rejection wick trade, breakout trade, divergence trade, area trade. So today this explanation is pure SRES, confirmation, and then retracement divergence. This is, and you can practice this and go back, just go back and see, hey, I see SRES. Look, if I had taken a bottom of the bar trade there, I'm not saying this is not going to be like this is going to be 100%, it won't fail, but your stop loss is the lowest. In any type, mid-band, at least you got to give yourself 5 points. Like today, we were all sitting, and I know it gets a bit of a, you have to understand one thing. I'll tell you easy secret. Once you have, you know your loss, at what point am I going to cut off? Relax. ठीक है, वो क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आपने एंटर ट्रेड डाला और वहीं से ग्रीन शुरू होता। ये क्या, मैं क्या सिर्फ वॉच कर रहा था नैस्डैक का 60 का नंबर, वो 62 से जब पुल बैक हुई ना तो हो गई, लेकिन दोबारा आई 44 पे और वहां से गई है 720 से गई है। तो हमारे एरियाज इतने पावरफुल हैं नैस्डैक में, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं 5 पॉइंट डन, 10 पॉइंट डन, 15 पॉइंट डन, 2 माइक्रो से। But for anybody trading quickly NQ, please put a stop loss of 35 points times 4 the ticks and TP for 15. This is an easy area trade, meaning that wherever you enter, give yourself 35 points. When I do ES, I give myself 5 points. You got to give it breathing room. 140 ticks. हाँ, तो 140 टिक्स आपका बनेगा इसका स्टॉप। नैस्डैक को 35 पॉइंट तो दिया करें यार उसको स्ट्रेच होने के लिए, क्योंकि वो जा सकती है। अब 35 के बाद तो फिर अगर आप 5 माइक्रो कर रहे हैं MNQ, ये 350 का लॉस है, एक हिट हुआ खत्म कर दें, कहीं मैं नहीं ले रहा। लोग क्या करते हैं 350 के बाद भी एक और अगला। So anyway, so my son these days, he's completed his per dia today, and he says $200 because he took the smaller account. So he's done. He says I take a $200 loss and I'm calling it a day, right? So There's one more thing. Every yes. single trade. Yes. How much profit do you want? सर मैं 15 पॉइंट ले रहा हूँ। 15,000 रुपए 10 का होगा ना, अगर 5 माइक्रो तो $150 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I'll give you free secrets, man, which free चीजें दे रहा हूँ। चैट जीपीटी के पास जाएं, सारों के पास है, वहां लिखें कि मैंने एपेक्स से 15,000 का अकाउंट लिया है, 1500 का थ्रेशोल्ड है, मेरे लिए प्लान बन करके दो, सिर्फ प्लान। So sorry, in English. Go to ChatGPT, type in, I would like, let's do it together. You see how powerful these analytics tools are for you, and it's absolutely free. हाँ चले आप आपके सामने करते हैं। See ChatGPT, let's log in and let's ask it some questions. And I would like to ask, okay, now I don't want to listen to an article. Let's ask it a question. So the question that I'm asking is my screen? Oh yeah, sorry. I'm like 5 people can't see. This picture is taken? Yeah, Good. I'll give you, because a lot of people don't know how many lots are good for me, how many markets is good for me. All right. I'm going to give it a very complicated query. And the query goes like this. I have purchased 2 accounts, 300K and 25K from Apex. It knows what Apex is. It knows. My drawdown is 1,500 and 7,500. All right. I plan to trade MES, MNQ. Okay.
what would be the best case scenario? Whatever, they will fix the spelling. My stop loss is 3.5 on MES and 35 on MNQ. Let's make me a plan with, so I can pass in 1 month. So suggest me, okay, suggestion, suggest me lot size. Also, I have a copier that allows me to set up ratios. Okay, so give it, so now it will think for you and it will say, all right, based on what it is, we'll look at. So your account 1, 300,000, account 2, your drawdown this, stop loss at this, it means how much you will lose on a contract. So it will start to give you how many trades you should take, at what point you should not trade anymore if you have lost. So risk to reward ratio. So trade copying, suggested trading plan. So it says your ratio right now has been 1 to 2. So you can set the adjustment expected return. So you can tweak your query, because what happens, a lot of people are confused with this, how many. So based on these research, I know one thing, $1,500, maximum 2 micros. Max in, I'm talking PA buys, I'm talking real accounts. EA, you want to pass a little faster, but maybe 5. 300,000, I did fast track trading 5 micros, no problem. So when I have a copier on, I have a $300,000 account and I have a $25,000 account. You know what I do? I enter with 2 micros, maybe 3 micros, because these are our PAs, they're going to pay me, right? And then I put 1 mini on the 300,000, right? So best friend is chat. Ask anything if you're not sure. I'm sure it'll give you some answer. I have users who take screenshots of our charts and talk to them and say, hey, is this SRE yes or not? Is this or not? So this is the best $20 a month I spend on just analyzing. So, and you can ask, so because before Google, you type in a question, you don't know if you're going to land on page number 4, page number 5, most accurate. And I'm not sponsoring ChatGPT. It's just, this is, or if you want to do this for free, go DeepSeek. Just go, they don't charge $20 a month. Go type in DeepSeek and you can get all of this information. You can plan your wedding on this. You can plan everything on, literally, I have to go somewhere. I just say, I have a trip coming up to Las Vegas. Can you put an itinerary together? I have 5 days, what places I should go and visit. So I see a lot of companies going bankrupt in next, for at least 5 years, like lawyers and things like that, where smaller work is done by these. Anyway. You know, the day before yesterday said 5578 is high indicating consolidation. Yes. And this one is RSI is 14, 44. हाँ, वो पढ़ लेता है सब कुछ यार, हर चीज पढ़ लेता है और so anyway, come. हाँ जी, क्या चीज? मैच लगा देते हैं सर. मेरे 5 माइक्रो बैठे बिठाए कहाँ चले गए जी? गुड. $185 भूल गया था, एक ट्रेड लगा हुआ था. 5 माइक्रो में लॉन्ग था. मैं लॉन्ग ही होऊंगा, एक्सपेक्टेड लो है भाई. ये देखें जैसे भी 30-20 में जो ये ES के अंदर, उसमें भी नीचे बार के साथ ब्लैक कैंडल के साथ एरो दिखा रहा है. नहीं, वो हर एरो हो जाता है. वो एरो साथ साथ जाता है. वो नहीं, वो अगली ब्लैक कैंडल पे नीचे चला जाता है. वो कैंडल टू कैंडल चल रहा है. That is not a safe. Yes, yes. So it should go to at least S2. Hopefully, we made some money here. We'll figure out if it goes to extreme low, that would be. सारे green ही गए ना आज MPT पे. ठीक है ना, सही था ना.
वो मैंने उधर नैस्डैक नहीं लिया, मैं इधर ईएस में चला गया था ना, वो 62 पे आई नहीं, 60 पे आई नहीं थी. All right, so market fell to 18,720. So our areas are done. So the show for today is done. Good. अब मैंने आपको बताना है ओसीओ का. अब मैं आपको ओसीओ सर नहीं मैं आपको बता देता हूँ आपको ओसीओ के लिए आसान. So what he is trying to accomplish is, I would like to trade the spikes. Spikes in the morning, 9:30. Every morning people are trading OCO orders. OCO means one cancels the other. So let's set up an environment first. So let's go and set up a chart. Other. Meaning एक order दूसरे को cancel कर देता है. हाँ जी, मैं अभी आपको live बताऊंगा. So let's open up a 1 minute candle. Not 30, not 15, not anything. So the best way to OCO orders are in a 1 minute. So we will open a new chart. Let's say on Nasdaq. This is not good for ES, not good for Russell, Dow, gold, nothing. Nasdaq moves like a bullet in the morning. You want to grab 20 points. That's all we care about, right? So this is a 1 minute candle, right? So I will turn on my chart trader. So ठीक है सर, मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, चार्ट हो गया. नहीं, ये तो बहुत एडवांस है. आपको 6 माह लग जाएंगे सिर्फ यहाँ पहुंचा. आप मिड बैंड तक अभी प्लीज चलें एटलीस्ट, या मिड बैंड नहीं तो वो पिछला जो कॉन्सेप्ट है ना SRES वाला, वो बॉटम ऑफ द बार. अच्छा, यहाँ अपना वो इंडिकेटर ऐड कर लें, ये सुपर एरियाज वाला, because you want to see that where the levels are, right? So my levels are there now. 1 minute chart, and I will change. When you add the indicator on 1 minute chart, please turn off auto scale. Turn off auto scale. Otherwise, you're going to get into a bit of a problem, and the chart is going to get squished so much. So this is, I have added my indicators, and नहीं पहले तो यहाँ लिखें, नहीं एक लिखें बार टाइमर. बार टाइमर का इंडिकेटर डालें और प्राइस लाइन का इंडिकेटर डालें. और प्राइस लाइन की बेशक विड्थ जो है ना 3 कर लें, ताकि आपको, या 2 कर लें. Yeah, so I've added 3 indicators to this, my algorithm of super areas, so I can see which way the market is predicted. Bar timer. और तीसरी प्राइस लाइन. हाँ, इंडिकेटर में प्राइस लाइन नजर आ जाएगी. और देखिए S2 पे चली गई. So from expected low, S2 should be your exit point, guys. If you are trading, S2 should be your exit point. यार नहीं, यहाँ से ना लीजिएगा. मार्केट रेजिस्टेंस ठीक है, लेकिन हम बाय करेंगे. यहाँ से अगर ये निकल गई, तो अगर हमने सेल करना है ना, पता कहाँ से सेल करेंगे? R1 से, या एटलीस्ट S1 से, अगर वो रेजिस्टेंस बनी तो. लेकिन R1 तो बनेगी, क्योंकि R1 नाइट सेशन हाई है. हाँ जी, तो R1 एंड सॉरी ठीक, R1 का वेट करें. R1 पे सेल कीजिएगा, तो क्योंकि यहां से S2 अगर तोड़ गई तो फिर पहले इसका ब्रेक लगेगा S1 पे, एंड देन इट विल गिव मी 1 मिनट. All right. 30s. तो एरिया में थोड़ा सा हौसला रखें, स्पेशली नैस्डैक के साथ साथ, क्योंकि उसकी कोरिलेशन बहुत ज्यादा है.
Okay. Okay. So far with me? Yes. ठीक है. Right click in this area and it says OCO order. OCO order. नहीं राइट क्लिक इस चार्ट ट्रेडर के राइट पे. ठीक है. और ठीक है, अब ये ऊपर ग्रीन हो गया, वो देखिए टॉप राइट पे ग्रीन हो गया आपका. ठीक है. What is this saying? That if I go into a trade, any other orders I will cancel. So you can place as many orders, right? So number one is this: I will create an ATM first. पहले आप एक ATM बनाएं. ठीक है. कोई मैंने इस आपके केस में बनाई है ये 20 and 60 का. Doesn't matter. ठीक है. 20 और 20 बना लें, जो भी आपने बनानी है. ठीक है. 2 ATM बनाए जो 100% आइडेंटिकल हो. OCO1, OCO2. पहले ये ठीक है. Doesn't matter. 1 and 2. Now this is where, so right now you see your price line is here, right? Right click wherever you think the price should spike from. 9 देखिए, चले मैं लगा देता हूँ 940 पे. 940 पे मैं गया, राइट क्लिक किया और मैंने यहां लिखा बाय स्टॉप लिमिट. Okay. Then I went to 900 and 900 zone and I did a sell stop limit with a different ATM, not OCO, different ATM. So sell stop limit. So as you see now, this is what I've done. पहले एक ATM select करें, वहाँ buy stop करें, फिर दूसरी ATM select करें, वहाँ OCO. अब देखें अब क्या हो रहा है. 9:30 बजेंगे ना, या 9 जैसे मार्केट खुलेगी या आपकी स्पाइक आएगी. सेम अकाउंट है, 2 अकाउंट नहीं है. या ये जाएगी या ये जाएगी, राइट? So a lot of spikes you can take, you don't have to hedge anymore. Hedge means you have one account that's going long, one account that's going short. Most companies except Apex don't allow hedge. So this is a better advantage for you to take single account and you can do, and see right now, this is a 1 minute candle. If it breaks this, I'm expecting it will open. So it will cancel this order and open my bracket, TP and SL. So let's see. Now it's very close to this. So I'm looking at visually where I think, watch this. Hey, next candle, let's see where it opens. If it opens below, there you go, it opened. Now I'm already in my profit going down. हाँ ये वो देखें जी $145 बन गए. ये देखें सुबह आते ही. तो आप वो जज 1 मिनट में करना है ये. ठीक है. और आपका स्टॉप लॉस वहां आप ट्रेल लगा दें. ये देखें $200. तो थोड़ा दूर लगा के आपको कि अगली मिनट की कैंडल की स्पाइक इधर है या इधर है, राइट? सो 165 170 एंड देन ऑफ कोर्स आप अपना ट्रेल कर सको. And generally you will break this because we are only 15 points anyway. And you can close your trade early. Only works for Nasdaq. Doesn't work on ES, on gold, because it needs a bit of a momentum. And Nasdaq does give it. So, but my stop loss is still there. Then let's see where the next candle opens. So these are the OC orders. देखिए ऊपर वाला खत्म हो गया, डेड हो गया, और नीचे वाला भी. ये सिर्फ एनक्यू के लिए, क्योंकि उसमें यार ईएस में तो बेचारी हमारे एरिया पे आके हमें लटका गई, राइट? तो वो देखिए स्टॉप लॉस हिट हो. ठीक है. सो आइडिया इज यू नॉट हेजिंग, यू एक ही अकाउंट में दोनों तरफ एडवांटेज ले लें. ये कहाँ चलता है? एवरी नाइट यू हैव एरियाज कमिंग टू यू. Put one on expected high, put one on every night. मेरी religiously जाके सो जाए ना, अपनी ATM OCO1 लगा दें ऊपर, OCO2 नीचे लगा दें.
rather than mini and micros, right? So now you can have one account, 2 ATMs, या ये हिट होगा या ये हिट होगा ना, ऐसा ही है, तो जाके सो जाए। गोल्ड पे लगा दें एक्सपेक्टेड हाई, क्रूड ऑयल पे लगा, जो जो रात के एरियाज आते हैं, और सुबह उठे कई दफा बने होते हैं कि होता है अच्छा यार ये हिट होके मुझे वो मुर्गी देगी 2 अंडे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड, नहीं नाइट के, जो इवनिंग के आए हैं, इवनिंग के आपको 2 ही रेंज आती हैं, एक एक्सपेक्टेड हाई और वो सुबह 6 बजे हिट हुआ होता है। सो बिकॉज आप अब जब सो जाएंगे ना, आप इमोशनल नहीं होंगे, आपको पता है मेरा लॉस क्या है, आपको पता है यार मेरा लॉस 5 पॉइंट हो गया ना इस पॉइंट से, तो मेरा खुद ही बंद हो जाएगा। तो ना आप उसको देख रहे होंगे। अभी मैंने $187 5 माइक्रो से बनाए हैं, मैं ये भूल ही गया ऑर्डर लगा हुआ था, ठीक है, वरना आप सामने बैठे रहो ना, आप शेक करते रहते होगे यार। तो जो लोग एरिया टू एरिया खेलते हैं ना, आई स्वेयर दे डोंट लुक एट द कंप्यूटर। उन्होंने ट्रेड लगाया हुआ है, कई दफा ट्रेलिंग में चल रहा होगा, ठीक है, ट्रेलिंग में चल रहा है, हो ये रहा है, आपने 50 देखे, इसीलिए आप मिड बैंड में सिर्फ 50 पे बाहर आ जाते हैं ना, 50 देखे वो 300 का ट्रेड होता है, पैनिक नहीं जल्दी। इट्स ओके, बट 873 पे फिर आ रही है नीचे, अभी नहीं, अभी तो 100 पॉइंट दूर है जी। So this is called an OCO orders and I will double check. 200 पॉइंट चढ़ी ऊपर, दूसरा OCO orders, you have your own stop loss. There is no standard version of stop loss. मैंने लगाया था सर, मैं रियल से भी कर दिए, दे दिए पैसे, हाँ मजा आ गया। सर आप अपनी मर्जी से, आपने अकाउंट उड़ाना है या अकाउंट को सेव करना है, या 930 पे आप कहते हो कि यार ये देखें ये आप पे छोड़ा हुआ है। नहीं 5 पॉइंट मत देखें, अगर आप ईएस ले रहे हैं, नैस्डैक 35 पॉइंट, ईएस 5 पॉइंट ऊपर वाले रेंज से, ताकि ये ना हो कि आप सुबह उठे वो ये कम हुआ हो कि आपने 2 पॉइंट प्रॉफिट 2 पॉइंट लॉस, ठीक है, फिर 1 मिनट में तेज चलेगी, बहुत तेज चले। और एपेक्स डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। एपेक्स की लेजेंड की $450, रियलाइज चेक करें कितना बनाया, कोशिश करके अनाउंस ना करें आपने जितने भी बनाए हैं, क्योंकि श्रीलंका में किसी ने इतने नहीं बनाए, तो वो बेचारा परेशान हो रहा है कि सामने उनको लगता है पता नहीं यहाँ पर बनाने से मैं आपकी उंगली पकड़ के ट्रेड कराता हूँ, ऐसे नहीं होता। रियलाइज, एक्चुअल रियलाइज, हाँ जो ये वाला है 419, ठीक है, आपके 420 बने, 500 नहीं बने। बंद कर दो सर आप खेलते रहेंगे, सारे वापस कर देंगे। एनी डस्टिंग, एनी डस्टिंग। हाँ 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 हाँ, उसको बस जाके नीचे से पहले उसको वो डुप्लीकेट कर लेना ताकि ईएस के भी रहें। एनी 973 एक्सेप्ट करें जी। डुप्लीकेट इन न्यू टैब। Amir, let's check you out. What's going on with Amir here? S2 के दरमियान फंस गई है। नीचे की तरफ नहीं मैं ले रहा। अगर ये काम R3 पे हो रहा होता ना तो मुझे ज्यादा सुकून, मुझे बेटर होता, क्योंकि वो सपोर्ट जोन में है ना। तो एक सेकंड देखिएगा, ये अभी लगने लगा एक कैंडल, क्योंकि इसको टेक्निकली तो नीचे जाना चाहिए, टेक्निकली, राइट। लेट्स सी, अभी तो चौथी कैंडल बनेगी, बनी, 1 टिक दिया उसने अभी प्रॉफिट, 2 टिक। मुझे ऐसा सारी सेटअप्स ज्यादा पसंद है अगर
साउथ में लग जाए, मीनिंग सपोर्ट जोन में लग जाए ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले जोन में लग जाए नीचे की तरफ, तो आपके पास ज्यादा बड़ी कन्फर्मेशन आ जाती है। अब चल रहा है। तो उसी को बार ऑफ करना पड़ेगा जब अगर नहीं कर रहे हैं हम लोग, या कोई फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा अगर ऑन है वहाँ पर। अब इसमें आप टॉप ऑफ द बार, हाँ जी, टॉप ऑफ टेक्निकली अब आपका टॉप ऑफ द बार बनता है यहाँ पर ऑर्डर, क्योंकि हर चीज आपके फेवर में आ गई ना। यहाँ से मैंने किया ये तो हाँ, न्यू टैब, यस, उसके बाद क्या करना है? ठीक है। और ऊपर NQ हो गया सर। आप नहीं, आपकी वर्क स्पेसेस गलत, मैं सिर्फ वर्क स्पेसेस में गया और फास्ट पे क्लिक किया, दैट्स इट। हाँ, वो MD फास्ट पे गया, दैट्स इट। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आपका टॉप ऑफ द बार एक्सपेक्टेड लो वन मोर टाइम, आई थिंक 4th टाइम टेस्ट हो रहा है जी। हाँ तो इसको मुझे यूज करना है अभी। क्या करूँ? ये क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेड लो के पास है तो ये टॉप ऑफ द बार के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? नहीं नहीं, वो चांसेस तो आपके सेम ही हैं। जब मैं उसको लगा रहा हूँ ना ऊपर वाली ग्रीन पे बाइक है तो वो ATM डिफरेंट हो, सेम हाँ, ATM पे वो जो है ना उसमें जो ऑप्शन जा रहा है वो कट, रिमूव, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, लॉक, वो तो प्राइस का ऑप्शन है। नहीं, मेक श्योर चार्ट ट्रेडर ऑन है। chart trader अच्छा, दोबारा जाके ऑफ करें फिर ऑन करें, फिर नहीं, चार्ट ट्रेडर को ऑन ऑफ करें। अब देखें 1510 में थोड़ा सा टॉप ऑफ द बार चला, थोड़ा सा 1510 बहुत तेज है। तो मुझे सिर्फ इसमें टॉप ऑफ द बार में भी टेंशन ये लग रही है कि क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड लो को टच कर रहा है, मे बी इट माइट जस्ट बाउंस बैक। नहीं, लास्ट टाइम तो ये एक्सट्रीम लो की तरफ गया है, तो एक सेकंड देखते हैं। ये देखें, ये पिक हुआ, लेट्स सी। ये एक पॉइंट देगा। हाँ, देखें, देखते हैं, लेट्स सी। अभी नहीं सर, देगा 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 देगा। 2 पॉइंट नजर आए थे हमें, 1.5 पॉइंट, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत कम है। हाँ सिर्फ मैं उस तरह देख, अब स्टॉप लॉस मैं वही, मेरे को लग रहा था कि क्योंकि एक्सपेक्टेड लो के पास है तो यहाँ से कहीं से ही बाउंस कर कहीं से दे। ही bounce कर सकती है। बट ये मैं अगर ये खैर आपकी बात ठीक है उसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत हाई है ये, लेकिन ये ऐसा ही है सेटअप में आपके ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 पॉइंट तो ये दे ही जाता है। हाँ, इजीली। एंट्रियां, सिर्फ एंट्रियां फाइनल हो जाएं, रेस्ट इज इजी के कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना। इसी को प्रैक्टिस करते रहे बगैर देखे खाली सिम पे रहूंगा, लेंगे हाँ, सिर्फ टेस्ट करेंगे यार, मुझे एंट्री लेनी आ गई। जितने भी SRES के उठाए हैं सब में प्रॉफिट वो एक लेकिन ट्रेड में लॉस किया था, ठीक है, बाकी सब में प्रॉफिट उसमें 500 का लॉस किया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा 40 टिक्स का लॉस। नहीं, फिर आप ऐसे करें कि अपना उसमें स्टॉप लॉस भी 2 पॉइंट ही रख लें। आप कहें कि यार मैं SRES के अंदर भी ना मैक्सिमम 2 का रिस्क लूंगा। हाँ, ये भी कर सकते हाँ, कि यार कि ठीक है, अगर 2 ही लेने, हाँ, कि अगर वो बॉटम ऑफ द टिक आई गई है बार, तो उसमें 34 टिक तक टेक्निकली आपको बैठना होता है। 60 मिनट वैल्यू एरिया।
Okay, somebody asked me to explain Apex 25,000 PA. Yep, no problem. I will double check. एक बार नेगेटिव चला जाता है तो सारा दिन मेरे नेगेटिव कर देंगे Anybody doing Apex? I had a question. Somebody explained Apex on. E0 LQ. E0 LQ. Give me a second. Okay. So Apex 25,000. Your account is open like this. 25,000, 1,500. These are the conditions. You have to make 3,000 before you can get 1,500. Don't lose 1,500. You have 8 days to infinite, lots of time.
You have to make at least minimum $50 to qualify for 30 close, that it's a live trailing threshold. This is the point that is most critical now on every PA. So to write it down, legends, apex, bullknox, and day traders, and take profit. All of their round 2, stage 2, is now live trailing drawdown. So it's live. It's not end of day anymore. So what does this mean? You take a trade at 54.60. Price goes up to 54.65. That's 5 points times 50, let's say, 1 minute, 250. But you close your trade somewhere 5461 at $50 plus, 1 times 50. And if you close this trade, they will write 50 in this bracket. Yes, you got 50. But they'll write negative 200 in this way. So that's a live trailing threshold example. So go in with an ATM. I want to get 8 ticks, 4 ticks, 10 ticks, 20 ticks, and then get out. So Making more help you. no, it's not about making more. What they don't want you to is just leave the trade open. They don't want you to leave the trade completely open and say, I don't know how much profit I want. आप ट्रेड डाला है, आपको पता होना चाहिए ना मैंने कब निकलना है. 4 टिक्स बाद निकलना है, 8 बाद निकलना है, 12 के बाद निकलना है, कितना है तो. So this is a live trailing threshold problem in all these funded companies. Only company that I know doesn't have this, but they only allow one account is Perdia Capital. That's only end of day, because there is no second stage. So stage number 2, Legends, Apex, Bullknox, Day Trader, Take Profit, they all have live trailing drawdown. For us, like new beginners, right? Mm-hmm. So whenever we go for trade, almost we go with the stop loss and 100%. There is not a single trade you go without a stop loss. If you have, I don't like to give this example, it's like running around naked. Literally, because you have no idea where the market goes. So this is how. So you have to have a bracket. So always go with an ATM and say, hey, I want to take 4 ticks TP and 12 ticks stop loss. Doesn't matter. So on the bottom of the bar, I've given you guys the stop loss of 3.5, which is 14 ticks. So sorry. so once we order them, they don't become become profit, right? Sorry? Once we order, then that becomes profit. No. So you have to prepare first. Once it gets picked up, Yes, yes. pick the right away. Then you got Definitely. but wherever is the price. It is lower. अच्छा फ्रेंड रिट्रेस एक्सटेंशन में अगर वो मेरे को लेना है तो वो फिर ब्रेकआउट वाली ट्रेड होगा. Yes. For me, the best one is 30-20 or 50-10. Use the easy trade I explained today. SRES, bottom of the bar, go long. Chart, which 30-20, 30-20. Yes.
दोबारा सॉरी यस सर दोबारा Not if I train myself daily for a year. Go slow, you'll make it. No problem. I didn't want 20 hours to move out. I thought I'll settle for a year. Slightly different. मैंने टॉप ऑफ द बार की लगाई है लेट्स होता है
एक पॉइंट तो दे ही दिया। अभी के लिए एक मिनट छोटा सा हो गया, बाकी देखो एरिया में डाओ तो दसो जी अब मजाक कर रहे हैं तो आपकी आवाज आती है डाओ लाइक सर मैं कहना भी सबका फायदा हो। चैट में लिखें क्योंकि वहाँ सारे ज्यादा पढ़ रहे हैं, यहाँ 5-10 हैं, यहाँ से माइक में आवाज नहीं पिक होगी। हजारों बंदा बैठा है जो अगर देख रहा है वो क्विकली डाउ पे चला जाएगा। वैसे तो मैं कह रहा हूँ हर किसी के पास ये एरिया चार्ट्स हैं लाइक तो मैं घूमता रहता मार्केट। ठीक एज लॉन्ग एज, क्योंकि देखिए वो कोल रिलेशन है ना डाउ पर उसके नैस्डैक ईएस, तो मैं सिर्फ ये दो देखता हूँ नैस्डैक ईएस, क्योंकि डाउ बहुत आगे चल रही होती है। वो तो फिर फ्यूचर की कंफर्मेशन है। थोड़ी बहुत कंफर्मेशन। मैं एक्चुअली आज पता की कितना थी तो मैं देख लिया कि एक्सपेक्टेड थे आगे राइट। तो मुझे ईएस है किसी S1 तो निकली थी, S2 वाली जा रही थी कि पता नहीं। हां सॉरी S2 तो निकली थी ईएस आपके बगैर तो नहीं तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि S2 में भी और ईएस में भी जाना है, S2 तो एक्सपेक्टेड थे। हाँ तो वहाँ बंदा ऑर्डर लगा सकता है। बहुत समय से लगा रहा था टाइम नहीं आ रहा लगे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं जब तक एक लेकिन जो एरिया ट्रेड करते हैं फिर वो कुछ नहीं करते क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसमें मिलता है। टाइम पास है राइट। नाले सर मैं तो आना बोलना उसको पास में जाएगा। ठीक है लगे रहे जी जो आपको जो 30-20 में डाइवर्जेंस की लाइन जब आती है तो उसमें डाइवर्जेंस में नहीं shooting back up, but the best is after the divergence take bottom of the bar. Yeah, that's what I'm हाँ saying. हाँ Bottom of the bar. yes yes After the divergence take मैंने bottom वो भी bottom of the bar divergence की लाइन देखी। हाँ, मैंने उसके बाद वो एक bottom bottom of the bar आया वो उठाया हाँ और वो शूट कर जाता है। मैंने तो शायद 2 पॉइंट लिखे निकल गया और ऊपर चले गए। yes yes हाँ ये है ना तो मैंने ये देख लिया bottom of the bar हाँ बाइक में यहाँ नीचे जो है ना bottom of the bar नीचे टिक दिख रहा है हल्का तो वो मैं हल्का तो मैंने वहाँ से बाय उठाया बॉटम ऑफ द नहीं तो सर कंफ्यूजन हो गया ये एक विक बनी हुई है। हाँ तो बॉटम ऑफ द बार है बॉटम ऑफ द बार तो बाय करना है ना, बाय लिमिट है। नेक्स्ट इसके बाद नहीं नहीं ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट है। वो ब्रेकआउट हो गया क्योंकि वो नीचे विक बना तो आप वो ले रहे हो और टॉप ऑफ द बार के वो और ऊपर जाएगा। मैं ले रहा हूँ तो नीचे से यहाँ से बॉटम ऑफ द बार बेसिकली बॉटम ऑफ द बार आपका मिड बैंड हो गया। यस एग्जैक्टली आपने यहाँ से इसके वहाँ विक से इसमें करेक्ट है। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि अगर विक के ऊपर जाना है तो वो बाय स्टॉप बनेगा, नीचे तो एक्चुअल रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस रिजेक्शन विक के बाद SRES के बाद बॉटम ऑफ द बार सबसे पावरफुल हो जाता है। लेकिन इस राइट जोन में हो, नीचे एस जोन में हो तो SRES ऊपर वाले लेने हैं, आर जोन में हो तो SRS नीचे वाले जोन में, वो ज्यादा कन्फर्मेशन। अब देखिए ये डाइवर्जेंस आई है 15-10 में उसमें आप टॉप ऑफ द बार यहाँ पे यहाँ पे पंजाब में डाइवर्जेंस आ गई ना यहाँ अभी मैं दिखाना जब तक ट्रेंड चेंज ना हो
राइट सर, जब तक ट्रेंड ना चेंज हो जाए तब तक Correct. मत बढ़ाओ। हाँ बेसिकली आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो ये अगर आप तो यहाँ से भी उठाते हो तो ये बॉटम ऑफ द बार में आप देखो, बॉटम ऑफ द बार में ये आपको देखो, बट ये बॉटम ऑफ द बार थोड़ा सा रिस्की है भाई, बिकॉज यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस बनी है 15 है। टेक्निकली तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैंने आज SRES की एक ट्रेड को छोड़ के बाकी सारी ट्रेड में सिंपल जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो उठाया है, सारी ट्रेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सही है। ये ब्रेकआउट क्योंकि नीचे रिजेक्शन लिखा है, मैंने नेक्स्ट वाला लगाया। हाँ तो ब्रेकआउट हो गया। चलिए आपको क्या बनती है ठीक है जी, मंडे चाय पिएंगे सर? चाय नहीं पीता मैं, कहवा पीता हूँ। ब्लैक टी है। I don't have. हाइलाइटेड है ग्रीन वाले, ये वाला जो है ये जो S1 S2 and expected growth। और ये आपका नहीं यार, जब सारे खड़े हैं तो इसके बाद आपका स्क्रीन तो ना निकलेगा। हाँ ये खड़ा है लाल, लाल में जो S1 या फेवरेट R1 है, R2 है, थैंक यू। जब सब लोग एरिया आ रहा है तो आपका ऑर्डर बैठता है, ये जब चार्ज सेट होगा और अकाउंट सेट किया जो भी है, और इधर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो सपोज इधर अभी चालू बनेगा, चालू होने का आपने ऑर्डर लगाया, जब ऊपर जाएगी ऑर्डर फिक्स होगा, आपका ऑर्डर आएगा। इधर आप स्ट्रेटजी अपना जब ऑर्डर फिक्स होगा तो ऑर्डर S1 को उसने अपना अपनी छत बना देना, मतलब छत बना देना, गोल पर रखेंगे तो छत से गोल बाउंस बैक करेंगे, तो अब छत है नंबर जब छत पर गिरेगा तो बाउंस गिरेगा, इसलिए अपने पहले ही सेट ऑर्डर बनाया।
ऊपर न जाए वो नहीं चले जाए तो उसको ये पिकअप करेंगे। तो आपका ये ऑर्डर पे चलता है ना, ऑर्डर पिक हो गया, नीचे आना ही आना है। हाँ तो यहाँ से तो उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉक लॉस लॉस को स्टॉप कर रहा है, प्रॉफिट और इधर अगर आप साइड में आ रहे हो तो वापस निकल जाएगा। चलो तो अपना डाल दो तो ये रेट लगेगा। तो आपको स्टॉप लॉस होता है ना, आपको लॉस लॉस होने से बचाता है। लॉस कम जाएगा तो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा। ट्रेड अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? अगर ये एरिया को लॉस आपको बंदा ऑर्डर लगाया ना, सेल का मतलब ओपन टू तो बाई नहीं करना। सब पर बाई नहीं करना। नीचे जाएगा तो अपने स्टॉक जाएगा, क्रॉस कर गया वो ऊपर लगाऊंगा, सबको क्रॉस कर गया स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर नहीं छोड़िए सॉरी नीचे आ जाए वापस ऊपर ही कर सकता है। उसके लिए तो उसको करने के लिए लॉस अपना तो पहले ये पहले लगा अभी जनाब एक्सपेक्टेड लॉस है जी सर। यस यस पूरी तसल्ली ना है। सेल नहीं तो सेल एमआई की क्या सर आपने कर ले बेटा पीएफटी करने की जरूरत है। मुझे भी नहीं पता जो मैंने बोला है उससे सुना। सेल नहीं सेल नहीं तो जब भी सुने हिट हो जाएगा तो इसलिए अगर जो रिवर्स में जाएगा तो रिवर्स में जाएगा तो नीचे नीचे को नहीं और जब ये प्रॉफिट आपको दिखाया तो जो ऊपर आपका स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है ना, उसको क्लिक करके सिर्फ क्लिक करना है, दबा के नहीं रखना पड़ेगा। क्लिक करके बोलते हैं माउस प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है माउस मारो बताएगा। फॉर एग्जांपल तो फाइनल इधर अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर एडजस्टमेंट इस लाइन पे ऑर्डर वो लाइन में आएगी वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया और नीचे आ गया मतलब आपके प्रॉफिट फ्री हो गया। अब ये वापस ऊपर की तरफ क्या करेंगे प्रॉफिट स्टॉप लॉस करेंगे क्लिक करना है छोड़ देना माउस को नीचे लेके आना और यहाँ पे आपका फाइल ऑर्डर जहाँ पे आपने डाला हुआ ना ऑर्डर के नीचे जो नंबर लगा उसके ऊपर मेगा से आके जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस शो कर रहा है वहाँ पे जाके ये वाला ऑर्डर आपको दोबारा क्लिक करना है आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा ताकि इतना जो प्रॉफिट है वो आपका फिर आपको धीरे धीरे जैसे मतलब आपका प्रॉफिट लॉस करेगा ऑटोमेटिकली आप सब
प्रॉफिट है मैंने इधर एक क्लिक करना है ठीक है एक क्लिक मैंने कर दिया तो ग्रे में आ रहा है ना माउस तो जब मुझे इधर प्रॉफिट आएगा ना मैं इधर ड्राइविंग है जो प्रॉफिट आएगा मैं इधर क्लिक कर दूंगा ओके बाद में उसको ट्रेडिंग है हाँ अगर आपने इधर क्लिक करके पकड़ रखा है ना माउस को तो आपका सारा चार्ट ऊपर नहीं चल जाएगा आपको क्लिक करके छोड़ना है छोड़ देना हाँ बाद में इसको चेंज अभी जब ये नीचे आएगा पैसे प्रॉफिट दिखाएगा तो दोबारा क्लिक करके मतलब क्लिक करके ना प्रॉफिट को अभी नीचे जाना है तो हमें बाय को इसको स्टॉप कर दिया इसको स्टॉप कर दिया स्टॉप लॉस अभी आपका हिट होने वाला है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया everything is not there ज़्यादा टेंशन नहीं हाँ लेकिन आपको ये भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको लॉस आपको जो लॉस हिट हुआ है आप दो भी इन्वेस्ट करना है मतलब अगर आपको पता लग रहा है कि यार प्राइस मुझे बहुत लॉस लेके जाएगा तो वो रिक्वेस्ट देगा और आपको एक बार मौका देगा कि अपना लॉस कम से कम करने का वो भी आप कर सकते हैं। नहीं उसको स्टॉप लॉस तो नीचे देगा अच्छा इसको नीचे लेते हैं हाँ अगर आपने क्लोज को लगाया ना तो मार्केट का रेट प्लस आप क्या देखिए हमेशा यूज करना स्टॉप लॉस नहीं मैंने ऑर्डर का एक तरह का टाइप है ऑर्डर टाइप है गुड केस कैंसिल का मतलब क्या है मान लीजिए आपने अपने टॉप 5 स्टॉक एनवीडिया का स्टॉक नहीं है ऑर्डर टाइप ऑर्डर प्लेस के बाद फाइव के ऑप्शन एंड एक और एसबीआई है ठीक है तो कैसे क्या होता है मतलब जब तक आप इस्तेमाल करो तब तक ऑर्डर लगा रहेगा तो मान लीजिए आपने एनवीडिया का स्टॉक बाय करना है 95 के रेट पे अभी प्राइस चल रहा है 102 का ठीक है आप पहले जब ये 95 का आएगा दो से ट्रेड कैंसिल कभी भी चाहे वो 2 साल के ये मतलब है कि ईटीडी का मतलब होता है फिल्डिंग सब जीटीडी का मतलब ये Good till cancel. So we only do मतलब जीटीसी हो गया ना good till GTD. जीटीडी है क्या I think good till date, if you can put a date, but it's we don't put we don't use it. Yeah. So we always do the day, right? ये आपका तब होगा जब मार्केट के साथ Why? What do you mean late? Okay. Love. जवाब नहीं आएगा यार
के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये आपके नए एरियाज आ जाएंगे। ओके जी। आपको शाम को करना क्यों? जैसे टाइम मिले नहीं, शाम देखो, शाम को मतलब मार्केट शाम को आपको कोई अगर न्यूज़ नहीं मार्केट में आपको लॉस नहीं फ्यूचर है बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, स्मॉल ट्रेडर्स को इतना मत कीजिए, वो ज़्यादा लाइबल में मतलब पता लग जाता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडर बैकग्राउंड आपका मेन वो आपका बेस है, उसके लिए आपको पता लगा कि आप इस जो आपने ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हो सकता है। All right, time to go. See you guys. हैं? Stage 2 पे फंसाओ 3 पर जरूरी है में पास करना है 30 दिन 5 दिन